A very warm good morning to one and all present here. Myself, Anas Deshmukh from Team Beyond. It is an honor for me to be the anchor of today's program. Let me start by sharing the idea behind this program. Being a woman is nothing less than a superpower. Every year, 8th March is observed as International Women's Day to commemorate women's cultural, political and socio-economic achievements. On this day, we honor the women in our lives who are strong, intelligent, talented and simply extraordinary. Women and men go through different mental illnesses, depression and anxiety for example. They are more common in females than male. Dr. A. Khadri's Mental Health Center has organized this event to celebrate Women's Day with an aim to spread awareness of women's mental health by hosting various competition and events. Today we will be having speech competition and poster making competition. Topics for speech competitions are: first, mental health of career-oriented women; second, role of mothers in mental health of children; third, overcoming negative self-talk; fourth, role of women in mental health of society. And the topic for poster making competition is healthy mind, happy life. Before we begin, let us get into the introduction of judges. Our first judge for the day is Mrs. Annie Nalla. A huge round of applause for her, please. Annie ma'am is double MA, MPhil and pursuing PhD in history from Banu University. She has teaching experience of over 26 years. At present, she is serving one of the most renowned schools of Aurangabad. Most of us, from Team Beyond, are her student. Teaching students is her passion, and loving students, guiding them and motivating them is her hobby. This is her quote. Our second judge for the day is Zaidi Sayyada Asra Ejaz ma'am. Asra ma'am is MA in American English, MA Psychology and MA. She did her training program in communication skills from Infosys, Pune. Currently, she is working at Maulana Azad College as assistant lecturer of English since 2016. A huge round of applause for her. Ma'am has been supporting to all of us from 5 to 6 years. पूरा कॉलेज टाइम मैम ने हमको बहुत सपोर्ट किए और हम कभी भी मैम को बुला मैम आता था. Our third judge for the day is Beatrice Johnson. Beatrice ma'am is MA, LLB, B.Ed and also she is a retired headmistress of St. Xavier's English High School. Ma'am has teaching experience of over 32 years. कोई है भी होगा भी नहीं over 32 years. Some of her awards are Best Teacher Award by Lions Club. She won that twice. Then Best Teacher Award by Little Flowers. A huge round of applause. मैम को स्पेशल वेलकम क्योंकि मैम एकदम शॉर्ट नोटिस पे है. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, ऑलरेडी बहुत लेट कर लिया हम लोग तो और लेट नहीं करते. मैं रूल्स बता देता. रूल्स इतने कुछ है नहीं. ईच स्पीकर इज अलाउड ए टोटल टाइम लिमिट ऑफ 5 मिनट्स. आई थिंक बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है ना ये बराबर से सर्कुलेट नहीं हुआ. सिर्फ आपको जो नोटिस बोर्ड पे लगाए थे आप लोग को वही मिला. 5 मिनट का आपके पास टाइम लिमिट है. यू विल बी मार्क्ड ऑन योर कॉन्टेंट, presentation, confidence and your ability to convey your message. और थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी लैंग्वेज चलेगा, इसलिए मैं भी कभी इंग्लिश बोल रहा कभी हिंदी बोल रहा. एनी लैंग्वेज द लैंग्वेजेस अलाउड आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल भी बोल सकते हैं. आनी मैम को समझता. Our first performer of the day is Limra Fatima from Sarosh Urdu School. Please come up on the dais. माँ अपने बच्चों के लिए जीती है और बच्चे उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है. अजीज साथियों, अगर हम माशरे में सेहतमंद अफराद और तंदुरुस्त, दिमागी तौर पर तंदुरुस्त अफराद का इजाफा चाहते हैं तो हमें बच्चों की दिमागी सेहत के साथ साथ उनकी जिस्मानी सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा. सामाईन इकराम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक बच्चे के पैदा होने से लेकर 7 साल तक के वक्त को बहुत अहमियत हासिल है
क्योंकि ये दौर उसकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पर बहुत अहमियत रखता है। हाज़रीन, जब न्यूटन 10 साल से किताब तैयार कर रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए किसी वजह से उठे। उनके कुत्ते का पाँव मोमबत्ती पर लगा, जिससे मोमबत्ती गिर गई और किताब के काफी सफ़ात जल गए। उन्होंने ताज्जुब से कुत्ते से कहा, हाय मैं तुझे क्या कहूँ। इतना कहकर वो दोबारा अपनी मेहनत में लग गए। हाज़रीन, ये तो एक कुत्ते की गलती पर न्यूटन जैसे बड़े साइंसदान ने हाय मैं तुझे क्या कहूँ कहा, तो जरा सोचिए, हम अपने बच्चों की जरा सी गलती या नुकसान पर क्या कुछ नहीं कह देते, यहाँ तक कि उन्हें मारने भी लगते हैं, जिससे बच्चों पर मनफी असरात होते हैं और वो पुरएतमाद नहीं बन पाते। लिहाजा आप भी बड़ा दिल रखते हुए बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करें। जब थॉमस एडिसन 8 साल के थे, वो स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक खत दिया और कहा, माँ मेरी टीचर ने कहा है कि ये सिर्फ आप ही को देना है। खत पढ़कर माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए। खत पढ़कर माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब वो खत पढ़ चुकी तो एडिसन ने पूछा, माँ इस खत में क्या लिखा है? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, मगर अफसोस हमारा स्कूल बहुत छोटा है और यहाँ अच्छे टीचर्स भी नहीं, इसलिए बेहतर होगा इसे आप खुद ही पढ़ा ले। कई सालों बाद एक दिन एडिसन को अपनी माँ के सामान में वही नोट मिला जो उनकी टीचर ने दिया था। उसमें लिखा था, आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं, हम उसे स्कूल आने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए बेहतर होगा इसे आप स्कूल ना भेजें। थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि एक दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा था, मरीज था, जिसे उसकी माँ ने सदी का जीनियस बना दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आजकल की माओं की तरह अगर ये माँ अपने बेटे के दिमागी तौर पर मरीज होने का रोना लेकर बैठ जाती, तो जरा सोचिए, थॉमस एडिसन एक अजीम साइंसदान बन पाता? नहीं, हरगिज़ नहीं। इस माँ ने हिम्मत न हारते हुए अपने बच्चे की ज़हनियत को बदलकर तारीख कायम की। अगर अर्ज़ हिंद पर किसी ने ताजराने फिरंग को दिन में तारे दिखाए, तो उस अजीम शख्सियत का नाम है शेर महसूद शहीद टीपू सुल्तान। इनका एक वाक़या बहुत मशहूर है। जब वो छोटे थे, उन्होंने एक शेर को मार गिराया। ये मंजर देखकर लोग उनकी माँ के पास पहुंचे कि तुमने इतने बहादुर और दिलेर बच्चे की तरबियत किस तरह की? माँ ने जवाब दिया, जब वो छोटा था मैं उसे दूध पिलाने से पहले वजू किया करती थी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज भी हम माशरे में टीपू सुल्तान, थॉमस एडिसन जैसी अजीम शख्सियत इस कौम को दे सकते हैं, जिसके लिए माओ को जद्दोजहद, कुर्बानियाँ, मेहनत और सबसे बढ़कर अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत देने की जरूरत है, जिससे आजकल के बच्चे महरूम हैं। सामईन, मैं इस नज़्म पर अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगी। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। क्या बसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादा, मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतमाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, ऐ मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल। तुम ही सुबह मेरी शाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Wonderful performance. ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुझसे है. Nice. Our second participant is Uzma Khalid from Sarosh Urdu School. Honorable Chief Guest, respected dignitaries and my dear friends, I wish you all a very warm good morning. I wish all the ladies here a very happy Women's Day. My name is Uzma Khalid and I am from Sarosh Urdu School, Paregaon. On this auspicious day, I am standing before you to deliver a speech on the topic mental health care of career-oriented women. Before I begin my speech, I would like to dedicate a short poem to all the women on this Women's Day. A daughter who serves, a sister who loves, a mother who bears, a friend who cares. Best over of love, life, friendship and trust, a picture of poise, strength and grace. A woman is the one who is a winner all alone. Women are equally important in society as men are. They are the backbone of progressing nation.
Besides managing household work, women are also engaging themselves in service sector like banks, hospitals, airlines, schools and every other possible work field. As well as they have started showing interest and setting up their own business. Not to mention, they are providing excellent outcome in their respective areas. In the world of sports, women have set a milestone for men to achieve. Today, women's roles are emerging differently with new commitment and career oriented, as well as commitment by families. So, this in turn lead to a number of stress and strain among working women. In the present scenario, women at work can be seen everywhere, whether in outside India. As the education, awareness and opportunities by government by women have been seen increasing day by day. So slowly they are strengthening their position in every sphere of life parallel to men. While working women parallel to men at workplace, working women also play multiple roles such as child rearers, parents, teachers and caretaker of their elderly parents. This in turn lead to a strainers for them. Mental health is a serious concern for all women who strive to be at the top of their game, whether their goal in the Olympics or success and fulfillment in their chosen profession. Like every coin has two sides. There are many ways in which a career-oriented woman can focus in their mental health, like practicing meditation, finding something they can learn on strength, recognize that it's okay for people to have opinion that differ from theirs. Don't take it personally. Take time for themselves and their mental health. This might mean taking a step back from the grind to rest and rejuvenate. Choosing to take their own time instead of rushing to get something done. Taking advantage of corporate such as employee assistance programs or just take a moment to breathe. Forgive quickly, let go of resentment and move on. Focus on your path, accept that you are control of yourself. At last, I would like to say that we cannot dispute that women now hold highest position in every industry and take on the most extraordinary responsibility that he has ever seen. Let's demonstrate our pride in their achievement and commitment to building a world free of all ill for women. Thank you. Our next performer is Shamama Kazi, Roots and Wings. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear audience, Assalamu alaikum warahmatullah. We all have an inner critic. At times, this little voice can actually be helpful and keep us motivated towards goals. Like when it reminds us that what we are about to do may not be wise. However, this little voice can often be more harmful when it gets into the realm of excessive negativity. This is negative self-talk. Negative self-talk is an inner dialogue that we have with ourselves which may be limiting our ability to make positive changes in our life. Negative self-talk can not only be stressful, but it can really stunt our success. Negative self-talk is something that most of us faces time to time. And it comes in many forms, creating significant stress. Not only to us, but to those around us if we aren't careful. Our life is inherently filled with obstacles that aren't in our control, like the circumstances we are born, events that are unforeseen, emergencies that we're unprepared for, etc. But we have the control over our thoughts and the way we care for ourselves. Life is inherently filled with obstacles and we do not need to make things more difficult for ourselves and inflict more pain than life inherently brings. One thing we can do for ourselves that doesn't even cost 1 cent and pays huge dividends is to give ourselves a break. Negative thoughts and feelings do untold damage, visible and invisible, so it's important to keep them to a minimum. If negative self-talk is harmful, then why do we really do it?
for our survival. Our ancient ancestors lived in a threatening world and were more likely to survive if they were prepared for the worst. As a response, they created an instinct which favored negative thinking. Today, those threats are largely gone, but the instinct still remains. We are all born with a glass half empty view, and the more we indulge in negative self talk, the stronger our negative bias gets. Our brain actually strengthens up the neural pathways towards negative thinking. Our other people's criticisms and opinions have also influenced our mind since childhood. All this makes it easy for the mind to think up reasons to question our self-worth and bring us down. To overcome negative self-talk, ask yourself, would I say these negative things about my closest friends? Probably not. So we need to learn how to give ourselves the same gentle care and respect as we do our loved ones. We should think that the best is going to happen, not the worst. But how to break the cycle of negative criticism? It may be a hard habit to break since the person we spend the most time with is ourselves. But there are always ways to break the cycle of negative thinking. First, become aware of negative self-talk. Second, practice positive self-talk. Third, challenge negative self-talk. Fourth, come out of yourself. Fifth, step it out. Sixth, focus on the present moment. And the last, that you have to think that you are the best. Positive thinking doesn't mean that you ignore life's less pleasant situations. It just means that you explore unpleasantness in a more positive and productive way. You think the best is going to happen, not the worst. So, I'll leave you for this for today. Meet you soon. Thank you so much and have a great day. Our next participant is Asma Fatima from Roots and Brains. Respected elders, my dear brothers and sisters. Assalamu alaikum. Whom should I give my love, respect and honor after Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad? Yes, it's mother. But why mother is given such a bad position? Because of the important role that she plays in the life of the children. There are many things that she do for us for today. We will stick to her role in shaping our mental health. As we all know, mothers are the first educators of the children. And they have a significant impact on the way the children perceive world around them. This impact can be both positive and negative, and it's therefore essential that mothers should be aware of their role in shaping the mental health. In Indian context, mothers are the backbone of the family. There are many responsibilities in upbringing of the children and often the first primary caregivers. Mothers are also expected to instill the values of respect, kindness and empathy in the children. However, we have also seen a rise of mental health issues among children including depression, anxiety and stress. It's therefore important to recognize the role of mother that can prevent and address these issues. From an Islamic perspective, the role of mother is even more significant. In Islam, mothers are considered to be the primary caregivers and are entrusted with responsibilities in nurturing the children's souls. Mothers have profound impact on the emotional and spiritual development of the children. Mothers have profound impact on the emotional and spiritual development of the children. It is through the love and care of mothers and develop a sense of security and emotional stability. A mother's love and affection provide a safe space for children to express their feelings and emotions and crucial well-being. Moreover, mothers are also responsible for teaching them Islamic values including composition, generosity and forgiveness. Mother also plays a role in preventing and identifying and addressing these issues. Mothers are often the first to notice changes in children's behavior, such as mood swings, changes in eating habits or sleeping patterns, and withdrawal from social activities. It's therefore important for mothers to be aware of signs and symptoms of the children for mental health. In order to fulfill and promoting the mental health of their children, mothers must take care of their own self. Mothers who are stressed or depressed are more likely to have children in mental health issues. It's therefore important that mothers should take care of themselves both physically and emotionally and seek professional help if in need. In conclusion, mothers play a crucial role in identifying and addressing these issues.
they are the first educators of the children. And they develop emotional and significant impact. And mothers should take care of them both, physically and emotionally, and seek help if we need. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us in fulfilling our responsibilities, and may He bless us with all good health, happiness and success. Ameen. Jazakallah khair. Participant is Samia Fatima, Roots and Wings. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Assalamu alaikum everyone. Women are not machines that can endlessly work and achieve. We need rest, self-care and support to thrive, said by Dr. Tracy Douglas, a clinical psychologist. Good morning everyone. Mental health is a crucial aspect of overall well-being. It is an issue that affects both men and women. However, career-oriented women face unique challenges that can impact on their mental health. Women are often seen as emotional and less rational, which can impact on their mental health. The pressure to succeed. Women are often expected to excel in their careers while also maintaining a home and family life. This can create immense pressure to perform well at their workplace. Discrimination. Women often face discrimination and gender inequality at their workplace, which can lead to feelings of frustration and inadequacy. This can also impact on their self-esteem and confidence. Work-life balance. Finding a balance between work and home can be challenging, and this can also impact on their this can impact on their credibility and ability to lead. Stereotypes are another challenge faced by career-oriented women. Women are often expected to conform to traditional gender roles, which can limit their opportunities and lead to feelings of inadequacy. For example, women are often expected to be nurturing and caring, which can make it difficult to assert themselves at their workplace. Additionally, women are often seen as emotional and less rational, which can impact on their credibility and ability to lead. Career-oriented women face unique challenges and it is essential to recognize and honor these roles. Balancing these roles can be challenging, but it is crucial for good mental health. Here are some roles that career-oriented women play. Mother. Women are often caregivers who prioritize their children's needs. Daughter. Women are often responsible for their aging parents and responsible for managing family relationships. Employee. Women are often responsible for caring for are dedicated for employees who achieve their goals and advance in their careers. Wife. Women are often partners who support their spouse and build strong relationships. Thus, maintaining a good mental health is crucial for career-oriented women. Here are some tips to help. Prioritize self-care. Take time to care for yourself and engage in activities that bring you joy and relaxation. Set boundaries. Set clear boundaries between work and home life, which will help you maintain a healthy balance. Seek support. Connect with women who are facing similar challenges and support from family, friends and mental health professionals. Challenge gender stereotypes and work to create a more inclusive and supportive workplace. Practice mindfulness and religious. Engage in mindfulness practices and connect yourself to the one true God. By doing so, women can maintain a good mental health and thrive in their careers and personal lives. Thank you. Our next participant is Mahi Fatima from Boone School. Hello everyone. Thank you for having me. My name is Mahi Fatima and I'm going to be speaking to you today about how to overcome negative thoughts. We all have an inner critic. At times, this little voice can actually be helpful and keep us motivated towards our goals. Like when it reminds us that what we are about to eat isn't healthy or what we are about to do may not be wise. However, this voice can be more harmful than helpful. This is known as negative self-talk and it can really bring us down. Negative self-talk can take many forms. It can sound grounded. For example, I'm not good at this, so I should avoid it for my own personal safety. Or something mean like, I'll never do anything right. Basically, negative self-talk limits your ability to believe in yourself and it has often been linked to depression and anxiety. Negative self-talk leads to limited thinking.
the more you tell yourself you can't do it, the more you believe it. Now, let us see how to overcome negative thoughts. Catch your critic. For example, notice when you say things to yourself that you would not say to a good friend or a child. Shift your perspective. For example, imagine that you're panning out and looking at your problems from a great distance. Even thinking the world as a globe and of yourself as a tiny, tiny person on this globe can remind you that most of your worries are not big as they seem. This can often minimize the negativity, fear and urgency in negative self-talk. To conclude, I would just like to add that we as individuals should resist ourselves from negative self-talks and believe in ourselves. More power to you. Our next participant is Khan Nazia Eram from Marathwada College. Hello everyone, Assalamu alaikum. How to overcome negative self-talk. A single negative thought can destroy your one creative mind. So first let's see what is negative self-talk. Basically, negative self-talk is any inner critic dialogue you have with yourself that may be limiting your ability to believe in yourself and your own abilities and to reach your potential. It is any thought that diminishes your ability to make positive change in your life or your confidence in yourself. To do so, negative self-talk can not only be stressful, but it can really stunt your success. So here are some ways, these are my self-experience tips to how to overcome negative self-talk. So the very first thing is, be your own best friend. We all know that what best friend stands for. They always motivate you, they always guide you, they always say good things to you, they never demotivate, they never say any bad thing, and they always push you through hard times and they always tell you that you can do it. So when you become your own best friend, you say all these things to yourself, and it makes very huge difference when you become your own best friend, because you will say these all positive sentences to yourself that you can do it, you're loving, you are capable of everything, and you can make through it. So in case of overcoming negative self-talk, become first your own self-lover and best friend. The second tip is affirmative internal monologue. Now what is this? Actually, these are practice speeches using expressions like I can, I am, I agree. These are the positive commanding sentences. A few days back, I read a book, Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. He wrote that book on how to become successful and how does our thoughts affect in our success. So when you say that you cannot do it, your mind accepts it. We all know that our mind cannot see, our eyes see everything, and we say that I cannot do it. It means we are judging ourselves. Our mind is only listening to our conversation and reacting upon that. To overcome negative self-talk, first you have to change your way of speaking, and you have to change the way you're addressing yourself, that you cannot say yourself that I cannot do it. You have to say, I'm going to do it, I can do it, and I agree, I have these flaws, I have these mistakes, I have made these mistakes, but these are not defining my future and my career, but I can make it. These are positive sentences which really makes huge difference, and it really changes the game of life. The third tip is stop caring about other people's opinion. As Indian society, we really think that what people are thinking about me, but it should really not be matter to us that what people are thinking. They, to be honest, they literally don't know about themselves, that how can they judge us? We are the one who should judge ourselves. So make yourself the one who judge yourself, and we should not be thinking about society, that what are they going to tell me on this, what are they going to react on this. So become your own judger and stop thinking about other people's. The fourth tip is, you're not your thoughts. I have a really good quote here. Kill negative thoughts before they become your reality. As I told before, that whatever you think,
You're not that. When you think it, you started to become like that. To stop that thing and to stop become that person, you have to first stop negative thinking and stop expecting and accept everything. When you start to accept everything, you become the person you want to be. I will finish my speech with the one quote. Master the art of destroying every single negative thought to emerge from darkness and light up the world just like a sparkling diamond. You can always change your life and reality just by changing your angle of perception about things that are bothering you. Thank you. Our next participant is Arshma Naz from Marathwada College. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Thank you for having me here. My name is Arshma, student of Marathwada B.Ed College, and I'm going to be speaking to you all about role of mothers in mental health of children. Let me begin with a thought dedicated to all mothers. ये कामयाबियाँ ये इज़्ज़त ये मकाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ ये इज़्ज़त ये मकाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया वो मकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है. A good mental health helps children develop socially, mentally, emotionally and physically. Mental health is the way children think and feel about themselves and the world around them. It affects how children cope with life's challenges and stress. Children with good mental health feel loved, safe and secure in their environment. They also feel happy and positive about themselves most of the time. They are kind to themselves during any emotion period as a part of growing up. Fear, disappointment, sadness, anxiety, anger, joy, and so on. Significant mental problems can do and occur in children. Children can show clear characteristics of anxiety disorder, ADHD, conduct disorder, depression, post-traumatic stress at a very early age. These conditions have a negative impact on children's development and functioning in the environment. A child's mental health is just as important as physical health and deserves the same quality of support. No bond is closer than one between a mother and a child. Do you all agree? Yes. The biological and psychological ties that bind mother and children are fundamental to the child's mental development. During pregnancy, until recently research, the primary focus on the mother's mental health and her baby was given. Parental depression or anxiety could lead to neglectful behaviors causing future mental disorders in a child. However, recent researches shows that a mother's mental health can affect her baby while she is pregnant. Researchers also shows that babies born to mother who was depressed while she was pregnant have lower birth weight. So if a mother experiences mental health problems, this can affect the way they are able to bond with and care for the child. This can have an impact on child's intellectual, emotional and social behavior. Mothers are guardians angel for their children. This reminds me of a very beautiful hadith. Abu Huraira reported that a man asked the messenger, peace be upon him, who is the most deserving of my good company? The Prophet said, your mother. The man asked again, then who? The Prophet said, your mother. The man asked again, then who? The Prophet said, your mother. The man asked for the fourth time. The Prophet replied, your father. Alhamdulillah. Now let's have a look on some ideas that a mother can promote in child's mental health and well-being. A mother should love their child no matter what. You can also show love through your body language, your non-verbal communication, for example, making eye contact, giving a hug or smiling at your child. If your child wants to talk to you, try not to stop them. Talk about your emotions with them. If your child is having trouble with friends at school,
You could give your child plenty of hugs and assure them that you are there for him. Enjoy time with your child doing activities they like. Encourage your child to try things they like. A mother should be patient towards the child. Try not to pressurize your child and be patient with them. A mother should respond a child with love in their worst moment, in their broken moments, in the difficult moments. Your child's mental health is more important than grades. Grades are not important. A mother shouldn't pressurize for grades of a child. Let them be little, let them be creative, let them be children. This almost brings me to the end of my speech. When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always thinks twice. A mother always thinks twice, once for herself, once for the child. Thank you. Our next participant is Abuli Gudekar from Kamal Nayan Bajaj. Good morning everyone, myself Abuli Gudekar and I am here to speak few sentences to how to overcome the negative self-talk. First of all, mental health means keeping our mind healthy. Mankind generally focuses on the physical health, but it is as equal as important to keep our mind and our physical body healthy. Then it becomes very important. Nearly one in the five world children and adolescents are suffering from the mental disorders, and depression is one of the leading cause of it. And also poverty is a risk factor for this. There are some mental habits to try and maintain each week, like self-care, relaxation. Also we should make the self-affirmation to ourselves, like I am confident, I am calm, I am positive, and I am patient with myself, and I am kind to myself. There are also some patterns, like we should replace the negative thoughts with the positive thoughts. Cause always not the thoughts can never be overcome. We should replace it by the negative thoughts. Also, we should be grateful in life. We should have the goals so that we can overcome the negative impact on our life. We should read the books. The books can really have the good impact on our mental health. Also, we should establish the new habits to overcome the negativity in our mind. Also, we should write instead of thinking. And when we write, it makes a sense about what we are writing, and we could overcome these things. We should do the meditations. We should also avoid the watching the news in the morning, because according to the research, 3 minutes of the morning news can have the negative impact on your mind. So we should have these all things. Thank you. Our next participant is Siddharth Gave from Bajaj College. My name is Siddharth, and this is my first time I am speaking. This is my first speech, and I am trying to do my best. So please don't mind me. As we all know, mental health is the well-being of the mind and soul. People generally are more focused on keeping their health, their physical health, body health healthy. People tend to ignore the fact that our mental health is very important to us. Proper mental health is linked to physiological, psychological and mental well-being. Here are some few mental habits to try and maintain. Try and find some time during your busy weeks. Connect with friends and family. Engage in activities which will provide you with a sense of value and that are important to you. Engage in activities that provide you with both a sense of pleasure and achievement. When you feel under weather or angry, try sayings like, I am kind, patient, I am surrounded by caring and supportive people, I feel calm and positive. Try acting and practicing positive self-talk. Focus on the present moment. As an introvert myself, I am trying to face challenges and come out from the comfort zone that I have made for myself. Start by following one simple rule. Don't say anything to yourself that you wouldn't say to anyone else. Be gentle and encouraging with yourself. If a negative thought enters your mind, evaluate it rationally and respond with affirmatives about what is good and about what is not. Think about things you are thankful for in your life. Thank you. Our next participant is Shubham Sapne from Bajaj Nursing College. Good morning, respected JS, respected Kadri sir, and all competitors. Negativity in the mind, not in the nature. तो हमारे शाहरुख खान साहब ने कहा है कि आप जिस चीज़ को दिलो जान से चाहो
उसको मिलाने में, पूरी कायनात मिलाने में उसको ज़रूरत करते हैं. तो मी तुम्हाला सांगणार आहे, तर आता सध्याचं जग जे आहे ते कॉम्पिटिशनचं जग आहे. तर सध्याचे आपले जे स्टुडंट आहेत, जे यूथ आहे, जे नाही का कॉम्पिटिशन फेस करते, आणि त्या कॉम्पिटिशन फेस करताना नाही का माणसाच्या लाईफमध्ये खूप सारे निगेटिव्ह थॉट येतात. आणि ते निगेटिव्ह थॉट येतात, पण त्या निगेटिव्ह थॉटवर ओव्हरकम कसं करायचं हे पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर आता बरेच स्टुडंट नीटची एक्झाम देतात किंवा MPSC UPSC कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देतात. तर ते देता कॉम्पिटिशनच्या एक्झाम देता स्टुडंटला असं वाटतं की सिलेबस खूप वास्ट आहे, की माझं होईल का नाही, की कधी माझं जर झालं नाही तर काय होईल, हे खूप सारे माणसाच्या मनामध्ये क्वेश्चन येतात. आणि मग असं पण येतं की आई बापाला कसं वाटेल, किंवा फॅमिली मेंबर्स किंवा रिलेटिव्ह काय म्हणतील काय नाही झालं तर नाही का एवढे सारे आपण विचार करत बसतो. आणि मेन जी गोष्ट आहे ती गोष्ट की आपण आपलं जे वर्क आहे ते करत नाही. आपण जर आपलं 100% वर्क केलं, 101% वर्क केलं, तर नाही का आपण ह्या थॉटपासून दूर राहू. जर आपण सक्सेस होऊ, आणि नाही जरी झालो, सक्सेस नाही झालो, तरी आपल्याला काय करणार, किंवा मी माझं 100% दिलं होतं, जे झालं ते झालं, इट्स ओके. स्वतःच्या माणसाच्या मनाला एक सॅटिस्फॅक्शन भेटतं. तर तुम्ही नाही का आपले 100% दिलं पाहिजे. तर आता यूथ आहे, तर बऱ्याच यूथ हा समटाईम इन रिलेशनशिपमध्ये आहेत. तर रिलेशनशिपमधले जे स्टुडंट असतात किंवा यूथ आहे, तर त्यांना समटाईम असं वाटतं की जर ही मला सोडून गेली तर, किंवा हा मला सोडून गेला तर असं खूप सारे त्यांच्या लाईफमध्ये असे विचार येतात. आणि जर दोघंही जर लॉयल असेल तर त्यांच्या मनामध्ये विचार असतात की आमचं जर मॅरेज नाही झाली तर, किंवा असं नाही झालं तर खूप सारे असे निगेटिव्ह थॉट येतात. पण जर त्यांनी असा एक विचार केला, आता आपण जी सध्याची कंडिशन आहे ती आपण जर जगलो तर ती इम्पॉर्टंट आहे. कारण प्रेझेंट इज इम्पॉर्टंट. आपण पास्टमध्ये जाऊन काही करू शकत नाही. पास्ट इज अ पास्टला आपण कधी बदलू शकत नाही. आणि फ्युचरमध्ये काय होईल काय नाही याची काय शक्यता आपल्याला सांगता येत नाही. तर मेन मुद्दा हा आहे की आपण प्रेझेंटमध्ये जगायला पाहिजे. आता आमची 3rd इयरची इथं पोस्टिंग होती हॉस्पिटलला. तर 3rd इयरची पोस्टिंग चालू असताना मला खूप समटाईम्स फर्स्ट टाईम खूप भीती वाटत होती. पेशंट्स आहेत, कोण नॉर्मल आहे कोण ॲबनॉर्मल आहे हे कळत नव्हतं कधी. तर मग मी जेव्हा मिराज कादरी सरांना पाहिलं, तर एकदम त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघून असं वाटलं की काय शांत माणूस आहेत, एकदम शांत, पोलाइटनेस एकदम, म्हणजे किती हायपर ॲक्टिव्ह पेशंट असला तरी त्यांना एकदम पोलाइटली हँडल करतात. मी म्हटलं अशी क्वालिटी माझ्यामध्ये यायला पाहिजे. अशी क्वालिटी जर माझ्यामध्ये यायची असेल तर मला काय करावं लागेल. तर मग मी इकडे तिकडे सर्च केलं किंवा माझ्या शिक्षकांना विचारलं. त्यांनी मला असा ॲडवाईस केला की मेडिटेशन कर, किंवा जे काही डिसीज कंडिशन आहे त्याबद्दल तू स्टडी कर, तर नाही का तू ह्याला ओव्हरकम करू शकतोस. आणि नाही का हे मी सर्व गोष्टी हे केल्या, मेडिटेशन केलं किंवा डिसीज कंडिशनचं हे केलं, आणि माझ्यामध्ये एक सेल्फ कॉन्फिडन्स आला. आणि नाही का मी जे घाबरणं होतं माझं ते कमी झालं. आणि नाही का पेशंटची जी चांगल्या प्रकारे केअर आहे ती केअर मला करता येईल. तर आपल्याला जर नाही का निगेटिव्ह थॉटपासून जर लांब राहायचं असेल, किंवा आपल्याला आपली मेंटल हेल्थ जर चांगली ठेवायची असेल, तर यामध्ये 3 की आहेत. तर पहिलं आहे जिम. जर तुम्ही जिमला गेलात, मेडिटेशन केलं, तर नाही का तुम्ही फिजिकली आणि मेंटली स्ट्रॉंग राहतात. आणि जो माणूस फिजिकली आणि मेंटली स्ट्रॉंग आहे तो नाही का कोणची गोष्ट लाईफमध्ये अचीव करू शकतो. सेकंड थिंग आहे की तुम्ही लायब्ररीमध्ये जा, नॉलेज गेन करा, पुस्तक वाचा नवीन. जर जो माणूस पुस्तक वाचतो, नवीन नॉलेज स्वतःमध्ये घेतो, तो माणूस कधी सेल्फ कॉन्फिडन्सचा डाऊन होत नाही आणि त्याला निगेटिव्ह थॉट येत नाही. आणि काही स्पिरिच्युअल हे पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे स्पिरिच्युअल म्हणजे तुम्ही जर मंदिरमध्ये जा, मस्जिदमध्ये जा, गुरुद्वारेमध्ये जा किंवा चर्चमध्ये जा, जर तुम्ही तिथे गेला तर तुम्हाला एक स्पिरिच्युअल एक हे मिळेल, कॉन्फिडन्स मिळेल. जो माणूस मंदिरामध्ये जातो किंवा 5 टाइम नमाज पडतो, तो माणूस नाही का निगेटिव्ह थॉटपासून दूर राहील. तो म्हणाल मी माझं चांगल्या पद्धतीने करतोय, प्रत्येक गोष्ट चांगलीच होईल. आणि ह्या गोष्टी जर नाही झाल्या तर आपल्या कादरी सरांचं आपण एकदा मार्गदर्शन करू शकतो. एवढं बोलून शब्दर्शन होतो. धन्यवाद. Our next participant is Shweta Surbi from Bajaj Nursing College. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित आजचे प्रमुख पाहुणे सर्वांना आणि सर्व सहभागीय स्पर्धकांना सुद्धा आणि सर्व विद्यार्थ्यांना, हाऊ टू ओव्हरकम निगेटिव्ह सेल्फ टॉक, म्हणजेच स्वतःबाबत येणाऱ्या नकारात्मक विचारांवर माणूस कशा प्रकारे त्याच्यावर कशा प्रकारे मात करू शकतो, किंवा आपण त्याला कुठेतरी बाजूला सरसावून कुठे पुढे वळू शकतो. बरोबर. तर
मी काय म्हणते, नकारात्मक विचार इतक्या सहजासहजी कसं काय येतात आपल्या मनात? आपण सकारात्मक विचार जे की आपल्याला हवे असतात नाही का, प्रत्येकाला आपल्या जीवनात सकारात्मकता पाहिजे असते की नाही माझं प्रत्येक काम हे खूप चांगल्या प्रकारे किंवा चोख प्रकारे मी पार पाडावं. पण तरी पण आपल्या परिसरामध्ये म्हणा किंवा वातावरणामध्ये म्हणा खूप सहजासहजी नकारात्मक विचार येऊन जातात आणि आपण त्या नकारात्मक विचारांना इतक्या सहजासहजी बळी पडतो की आपण सकारात्मक विचारांना कुठेतरी बाजूलाच राहून जातात जे की आपल्याला खूप गरजेचे असतात. यावर स्वामी विवेकानंद म्हणतात, तुमच्या शब्दांमध्ये आणि विचारांमध्ये इतकी शक्ती असते, तुमच्या विचारांमध्ये आणि तुमच्या शब्दांमध्ये इतकी शक्ती असते, त्यांचा वापर खूप जपून करायला पाहिजे. कारण की आपण जे शब्द वापरतो, जे आपण कृती करतो, कुठेतरी एका वेळेनंतर ते आपलं कुठेतरी भविष्य ठरवत असतं. जर आपण असा विचार केला, मी खूप दुर्बल आहे, मी काहीच करू नाही शकत, अशा बऱ्याच परिस्थिती येतात आपल्या जीवनात जेव्हा आपल्याला वाटतं की माझ्याकडनं नाही होणार, मी कसंच करू, माझ्याकडनं नाही होणार. मी म्हणते अशा का बरं येतात? आणि असा जेव्हा आपण विचार करायला लागतो तेव्हा आपण कुठेतरी स्वतःलाच कमी लेखतो, कुठेतरी स्वतःलाच स्वतःच्या नजरेत कमी लेखतो, बरोबर? तर हे विचार करणं किती पट योग्य आहे आपल्यासाठी? जर आपल्याला हे माहिती आहे की आपल्याला सकारात्मक विचार करणं खूप गरजेचं आहे, तरी आपण नाही म्हटलं तरी नकारात्मक विचारांना बळी पडतोच, बरोबर? तर आपण जर सूक्ष्म पातळीवर विचार केला या गोष्टीचा, तर आपल्या प्रत्येक शरीरामध्ये एक ऊर्जा निर्माण होत असते आणि ती ऊर्जा पेशींद्वारे जेव्हा निर्माण होते किंवा दिसून येते किंवा प्रकट होत असते, त्याला आपण कुठेतरी ॲक्शन म्हणतो, कृती म्हणतो, बरोबर? म्हणजे कोणती पण गोष्ट आपण जेव्हा शारीरिक क्रियाद्वारे प्रकट करतो ती कुठेतरी आपल्या मानसिक पातळीवर आधीच झालेली असते, बरोबर? तर जेव्हा आपण जी शारीरिक क्रिया करत असतो आणि तीच आपण कृती आधीच मानसिक पातळीवर केलेली असते, म्हणजे जर आपला मानसिक पातळीवर विचार करताना जर त्याचा सकारात्मक विचार असेल की नाही मी हे काम व्यवस्थित करू शकेल. आता उदाहरण घेतलं आजचाच वक्तृत्व स्पर्धेचं, खूप भीती असते मनात थोड्या वेळ आधीच की नाही माझं कसं होईल, थोड्या वेळानंतर नाही, आता अल्पाहाराचा एक थोडासा जो काही ब्रेक दिलेला जात आहे, कसं होईल कसं नाही. जर आपण सकारात्मक विचार केलं तर याच गोष्टीला आपण खूप चांगल्याही प्रकारे करू शकतो. कारण की खूप साहजिक आहे, आपण सुद्धा माणूस आहोत, एक नॉर्मल जी आपली धडधड आहे ती प्रत्येकाला होतेच, पण आपल्याला कुठेतरी त्याला स्वतःलाच सांभाळून समोर वळावं लागतं, बरोबर? आणि जेव्हा आपण त्या गोष्टींना खूप चांगल्या प्रकारे किंवा सकारात्मक विचाराने जर त्याला फेस केलं तरी खूप चांगला त्याचा परिणाम किंवा खूप चांगलं आउटपुट त्याचं आपल्याला भेटतं, जे आपल्याला शेवटी कुठे ना कुठे बघायला मिळतं, बरोबर? तर म्हणून एक खूप चांगल्या प्रकारचे किंवा जर आपल्याला जर सकारात्मक विचार पाहिजे असेल तर आपल्याला खूप आपले विचारांवर, आपल्या शब्दांवर काम करणं खूप गरजेचं असतं. यासाठी स्वामी विवेकानंद म्हणतात की जर तुम्ही जर चांगल्या विचारांना ग्रहण करू शकलात, जर तुम्ही चांगल्या विचारांना ग्रहण करू शकलात तर या ब्रह्मांडातल्या सर्व शक्तींवर तुमचं वर्चस्व प्रस्थापित होऊ शकतं. तुम्ही त्या सर्व चांगल्या विचारांचे खूप चांगल्या प्रकारे उत्तराधिकारी बनू शकता. तर याचा एक छोटासा प्रयोग आपण करूया, 1-1.5 मिनिटाचा प्रयोग आहे. माझं सर्वांना निवेदन आहे की सर्वांनी या प्रयोगामध्ये 1-1.5 मिनिटाचा प्रयोग आहे, त्याच्यामध्ये सर्वांनी भाग घ्यावा. कृपया आपले डोळे बंद करावेत व जसं मी म्हणेल त्याला 1 ते 1.5 मिनिट अनुभवायचा प्रयत्न करा. ज्यांना नाही समजेल त्यांनी पण जस्ट भावनांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ताकी ते कळेल तुम्हाला पण. तर सर्वात आधी फक्त आपल्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करायचा प्रयत्न करा. श्वास घेतोय, श्वास सोडतोय, हळूहळू या गोष्टीवर नियंत्रित करा, आपलं लक्ष केंद्रित करा. बरेच सगळे विचार येत आहेत मनात, येऊ द्या, पण तरीही लक्ष केंद्रित करा. आता कुठेतरी आपल्या मनात असा विचार करा की माझ्या मनामध्ये जे काही विचार निर्माण होत आहेत ते माझ्या या मनातल्या केंद्रापासून निर्माण होत आहेत. जी काही ऊर्जा आहे, जी काही सकारात्मक ऊर्जेचा विचार आहे तो या माझ्या मनाच्या केंद्रापासून निर्माण होत आहे. ब्रह्मांडामधली शक्ती आणि बुद्धी यांचा तेज माझ्यामध्ये वास करते. मी जो विचार करत आहे, ज्या गोष्टींची मी कल्पना करत आहे ते मी कुठेतरी पुढे जाऊन नक्की माझ्या आयुष्यात प्राप्त करेन. मी खूप आनंदी आहे. माझ्या आयुष्यात जे काही सुरू आहे खूप छान प्रकारे सुरू आहे आणि जर काही वाईट होतही असेल तरी त्या गोष्टीतून मला खूप काही शिकायला भेटतं, जे की मला हे जे अनुभव माझं शिकवू शकतं तो कोणताच एक शिक्षक नाही शिकवू शकत.
कारण की कुठेतरी पुढे जाऊन मला हे अनुभव खूप कामात येणार आहे. माझे मन हे सेवक आहे आणि हे माझं मन नेहमी ऐकतं. जो मी विचार करते, जो मी सकारात्मक विचार आणते, तो नेहमी मला एक शांती आणि शक्ती देऊन जातो. हळूहळू आपल्या श्वासावर लक्ष आपलं जे केंद्रित आहे ते असू द्या आणि हळूहळू डोळे उघडावे. कसं वाटतंय आता? छान वाटतंय? थोडी तरी सकारात्मक ऊर्जा भेटल्यासारखी वाटते. जर आपण हाच एक छोटासा 1-1.5 मिनिटाचा प्रयोग जर आपल्या दैनंदिन जीवनात एक रोज सकाळी करू शकलो तर खरंच किती छान वाटेल आपल्याला. आज आपण इतक्या वेळेत 1-1.5 मिनिटं काढले स्वतःसाठी. आपण आपल्याच आयुष्यात स्वतःसाठीच प्रत्येक 24 तासातले 5 मिनिट नाही काढू शकणार. स्वामी विवेकानंद म्हणतात की जर तुम्हाला जर तुमच्या आयुष्यामध्ये जर सर्वात उत्कृष्ट व्यक्तिमत्वाला जर भेट द्यायचं असेल तर कुठेतरी 24 तासाच्या शेवटी स्वतःला 5 मिनिट द्या. तुम्हाला सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्या प्रकारे कळून जातील. एक मी माझी स्वतःची लाईन ॲड करेल यामध्ये. कोणत्या गोष्टीचा विचार करावा, लक्ष देऊन ऐका. कोणत्या गोष्टीचा विचार करावा हा विचारही आपण खूप विचारपूर्वक करायला पाहिजे. कारण की कुठेतरी आपले विचारच आपलं भविष्य ठरवत. यावर मी माझ्या 4 ओळी शेवटच्या म्हणेल. सकारात्मक विचाराचे बीज गोवता, पालवी उमलावी सत्कर्म ठाई, आधार घेता सुविचारांचा, वृक्ष उभे राहावे आनंदमय. थँक्यू. Our next participant is Mayuri Khoke from MIT Nursing College. सन्माननीय रंगमंच, आदरणीय डॉक्टर व उपस्थित मान्यवर, परिचारिका वर्ग आणि तमाम महिला भगिनींनो, सर्वप्रथम डॉक्टर कादरी मेंटल हेल्थ सेंटरचे मी मनापासून आभार मानू इच्छिते की आमच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी त्यांनी आम्हाला इथे एक व्यासपीठ उपस्थित करून दिलं. त्याच सोबतच टीम बियॉन्ड याचे मला आभार मानायचे आहेत, कारण की त्यांच्या उपस्थितीमुळे मला कुठल्याही अडचणीशिवाय इथे पार्टिसिपेट करायला मिळालं. तर माझ्या आजच्या भाषणाचा विषय आहे ध्येयनिष्ठ महिलांचे मानसिक स्वास्थ्य. दरवर्षी 8 मार्च म्हणजे जागतिक महिला दिवस म्हणून साजरा करतो. म्हणून मी म्हणेन, कौटुंबिक जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडून समाजाच्या विविध क्षेत्रात उत्तुंग यश प्राप्त करणाऱ्या सर्व महिलांना माझ्याकडून महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पडताना एका महिलेला एक स्त्री म्हणून, बहीण म्हणून, बायको म्हणून किंवा एक मैत्रीण म्हणून विविध नात्यांमध्ये तिला स्वतःला सिद्ध करावं लागतं व तिला तिथे तिची भूमिका पार पाडावी लागते. आणि त्यासोबतच तिला बाकीच्या बाहेरील विश्वातही स्वतःची उपस्थिती ठेवावी लागते. पण हे 2 गोष्टी करत असताना तिला मध्ये तिची स्वतःची तारेवरची कसरत करावी लागते. आणि ती तारेवरची कसरत करत असताना तिला मानसिक स्वास्थ्याबरोबर, तिला शारीरिक स्वास्थ्याबरोबरच मानसिक स्वास्थ्याचा देखील त्रास जडतो. अशीच एक मानसिक स्वास्थ्य व शारीरिक स्वास्थ्याने ग्रस्त झालेली महिला काय म्हणते समोर बघा. दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम का जिक्र तक नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई. तेव्हा या सर्व महिलांना मी सांगू इच्छिते की स्त्री जिथे काम करते तिथे किंवा तिचा कुटुंब दोन्ही ठिकाणी ती एका पाठीच्या कण्यासारखी आहे. आणि जिथे तिचा पाठीचा कणा कोलमडतो तिथे सर्व व्यवस्था कोलमडते. त्यामुळे अशा महिलांना मी सांगू इच्छिते की झोपेचं सोंग घेतलेल्यांना उठवावं कसं, बहिरेपणाचा ढोंग घेतलेल्यांना सुनवावं कसं, अशिक्षित स्त्रियांना या शिक्षणाचा प्रभात आणावं कसं, आणि शिक्षण हेच आपलं जीवन आहे हे समाजातल्या लोकांना समजावून सांगावं कसं, हे समाजातल्या लोकांना समजावून सांगावं कसं, समजावून सांगावं कसं. म्हणून मी म्हणेन, स्त्री कभी हारती नहीं उसे हराया जाता है, स्त्री कभी हारती नहीं उसे हराया जाता है, समाज क्या कहेगा यह कहकर बचपन से उसे डराया जाता है, समाज क्या कहेगा यह कहकर उसको बचपन से डराया जाता है. पण याही उलट आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या परिचारिका वर्ग असू देत किंवा उपस्थित मान्यवर असू देत किंवा माझ्या सर्व मैत्रिणीत असू देत, यांच्याकडे बघून एक गोष्ट लक्षात येते की आजकालच्या स्त्रिया या स्वतः त्यांची यशस्वीरित्या त्यांची वाटचाल करत आहे, त्यांच्या मनात दुर्दब्य अभिलाषा ठेवत आहे, इच्छाशक्ती ठेवत आहे, आत्मविश्वास ठेवत आहे, चिकाटी ठेवत आहे आणि स्वतः त्यांच्या स्वप्न चाकोरीबंद न ठेवता त्याला वाट मोकळी करून देत आहे. यांच्यासाठी मी म्हणेन, अरे लाटा बरोबर तर सगळे पोहतात, पण खरा शूरवीर तोच असतो जो लाटांना भेदून पुढे जातो, जो लाटांना भेदून पुढे जातो. तशाच काहीशा आपल्या आत्ताच्या स्त्रिया आहेत. पण आज हे कलियुग आहे, यात काही केलं तरी लोक नावबोटे ठेवतातच. म्हणून या जगाला उद्देशून IPS विश्वासनाथ पाटील सर म्हणतात,
हे जग फार विचित्र आहे, याकडे लक्ष देऊ नका. हे नेहमी पुढे जाणाऱ्यावर जळतं आणि जे मागं राहते त्याची थट्टा करतं. त्यामुळे आता या दुतोंडी जगात स्त्रीनं जगावं तरी कसं आणि या दुतोंडी जगात स्त्रीनं मरावं तरी कसं. या दुतोंडी जगात स्त्रीनं जगावं तर सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, कल्पना चावला, किरण बेदी, प्रतिभाताई पाटील यांच्यासारखं जगावं आणि मरणही त्यांच्यासारखंच पत्करावं. म्हणून मी म्हणेन, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है. बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है. जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है. या ठिकाणी माझं अगदी छोटंसं उदाहरण देऊ करेन. या ठिकाणी एका जंगलामध्ये काही सशांची रेस लागलेली असते, एक कॉम्पिटिशन असते. त्या कॉम्पिटिशन मध्ये सर्व ससे लोक भाग घेतात. तिथे गेल्यानंतर बघतात तर हळूहळू एक ससे त्याच्यातले नावं कमी करत असतात. स्पर्धेचं बक्षीस असतं 10 गाजर बक्षीस ठेवलेलं असतं. त्यातले फक्त शेवटी तीन ससे तिथे काम करत असतात. 3 सस्यांनीच तिथे भाग घेतलेला असतो. त्यातला पहिला ससा म्हणतो, अरे खूप उंच पहाड आहे, आपण याच्यावरती कसं चढू, या पर्वताला जाऊन वापस येणं म्हणजे आपल्या जीवाची हानी होईल, आपल्याला त्रास होईल, ते काटे खळगे तर कसं जायचं आपण वरती. दुसरा ससा म्हणतो, अरे हो रे तुझं बरोबर आहे, म्हणून सगळ्यांनी नावं कट केले. तिसरा ससा मात्र वरती जातो, पर्वतावरती त्याची वाटचाल सुरूच ठेवतो आणि वरतून जाऊन जेव्हा वापस येतो तेव्हा बाकीचे ससे त्याला विचारतात, का रे तुला भीती नाही का वाटली, तू वरती गेला होता, आम्ही तुला मागून आवाज देत होतो. तेव्हा त्याच्यासोबत संवाद साधताना त्यांना कळतं की तो ससा बहिरा होता. आजकालच्या सर्व महिला वर्गांनी सुद्धा बहिरेपणाचं सोंग घ्यावं आणि मगच या जगात वावरावं, तेव्हाच कुठलीही महिला नक्कीच सक्सीड होईल. सोबतच म्हणून म्हणे आज कुठल्याही महिलेने एखाद्या स्पंज सारखं असावं, म्हणजे आसपासची जी काही निगेटिव्हिटी आहे, नकारात्मक ऊर्जा आहे, तिने ती अशी ग्रासून भरलेली असावी. पण जेव्हा लोक तिथून निघून जातील, ते पाणी त्यातलं निघून जाईल, तेव्हा ती आधीच्या तिच्या स्टेट फॉर्म मध्ये येईल. आधीची तिची सकारात्मक ऊर्जा तिच्यामध्ये उत्पन्न असेल आणि निगेटिव्ह एनर्जी निघून गेलेली असेल. त्यासोबतच एक छोटंसं उदाहरण देईल, ते म्हणजे तुमची ह्युमॅनिटी किंवा तुमची ऊर्जा अशा लोकांना वादविवाद घालण्यात व्यक्त करू नका की ज्या लोकांना कुठे तुमच्यासोबत कॉम्पिटिशनच नाहीये. जर तुम्हाला कोणी म्हणत असेल की हत्ती उडतो तर म्हणा, अरे हो रे बाबा, आज सकाळी माझ्या बाल्कनीत येऊन बसला होता. बोलण्यासारखं खूप आहे, पण वेळेअभावी थांबते. धन्यवाद. What a lovely speech, Mayuri. Our next contestant is Sayyida Nisha from Marathwada College. मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अहमद खादरी सर, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मोहतरम असातिज़ा और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम. मेरी तकरीर का उन्वान है बच्चों की जहनी सेहत में माओ का किरदार. माँ है तो खुशी है बहार है, माँ है तो खुशी है बहार है, माँ का वजूद रहमत परवरदिगार है. माँ अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है. माँ किसी के लिए एक मोहब्बत भरा एहसास है तो किसी के लिए एक घना शज्र जिसका साया छाँव तो देता है लेकिन सिले की परवाह नहीं करता. पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माओ के कदमों तले जन्नत है. माँ जिसकी पेशानी में नूर, आंखों में ठंडक, बातों में मोहब्बत, दिल में रहमत, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत होती है. अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी बंदगी और रसूल की पैरवी के बाद इताअत और फर्माबरदारी का दर्जा किसी को हासिल है तो वो माँ है. माँ की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों की माँ होती है. आज तक कोई रियाजीदां, साइंसदां माँ की मोहब्बत की पैमाइश नहीं कर सका. माँ ऐसी है जो खुद कांटों पर चलती है लेकिन औलाद को फूलों के नर्म बिस्तर पर सुलाती है. माँ दुनिया जहाँ का दुख अपने आंचल में समेटे, लबों पर मुस्कुराहट सजाए, हर वक्त रवा दवा रहती है. एक शख्स है गम तेरे लिए जब्त किए हैं, एक शख्स है गम तेरे लिए जब्त किए हैं, है दर्द से बेचैन मगर होठ सिए हैं. ये बात निराली दिले खुददार करे है, तड़पे है मगर दर्द से इनकार करे है. आसमान ने कहा, माँ की अजमत फल की वसीयतों से बढ़कर है. जमीन ने कहा, माँ के पैरों की धूल में फूल उगते हैं. चांद ने कहा, माँ एक मीठी रोशनी है जिसमें ममता की कलियां मुस्कुराती है. तारीकी ने कहा, माँ एक ताबंदा सितारा है जो अंधेरे में रोशनी बिखेरती है. माली ने कहा, माँ एक चमन है. फूलों ने कहा, माँ एक ऐसी खुशबू है जिससे कुल कायनात मुअत्तर है. माँ की कदर अक्सर दुनिया से चले जाने के बाद होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी कदर इसकी जिंदगी में ही करें और इसके पैरों में बैठकर जन्नत की सैर करें. बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद कहलाती है, क्योंकि बच्चे की शख्सियत माँ की गोद से ही परवान होना शुरू होती है. माँ का रहन सहन, बात करने का तरीका, लोगों से रवैये को बच्चा अक्कासी करता है. बच्चे का ज्यादातर वक्त माँ के साथ ही गुजरता है. बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाने में
माँ बहुत मददगार साबित होती है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो इस्लाम के वली गुजर चुके हैं, इस्लामी तारीख में इनका मुकाम माँ की तरबियत से ही मुमकिन हुआ है। तरबियत एक ऐसा खामोश अमल है जो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है और दुनिया में हमें रुस्वा होने से बचाता है। बच्चे की असल तरबियत घर के माहौल, रवैये, माँ बाप और बहन भाइयों के ताल्लुकात और अखलाक को देखकर ही होती है। अगर घर का माहौल दोस्ताना होगा तो बच्चे की जहनी सेहत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे और इसकी सोच भी मुस्बत होगी। और अगर घर का माहौल लड़ाई झगड़ों का होगा, माँ बाप बहन भाइयों में से एक को दूसरे पर ज्यादा तरजीह और तवज्जो देंगे तो इसके बच्चे पर मनफी असरात होंगे और बच्चे की सोच भी मनफी होगी और वो एहसास कमतरी और मायूसी का शिकार होगा। बच्चे की सेहत का बनना तो माँ के पेट में रहकर ही शुरू होता है। अगर माँ जहनी तौर पर सुकून में होगी, खुश होगी, इस पर बेजा जुल्म न होता होगा, सिगरेट नोशी वगैरह से बचती होगी तो इसके बच्चे की सेहत पर अच्छे असरात पड़ेंगे। माँ को अपने गुस्से पर काबू रखकर बच्चों से दोस्ताना रवैया इख्तियार करना चाहिए जिससे बच्चा अपने जज्बात, ख्वाहिशात और एहसासात को माँ के सामने खुलकर बोल सके। और अगर माँ से सख्ती से पेश आएगी तो वो अपने ख्वाहिशात और जज्बात को अंदर ही अंदर दबा देगा और ज़हनी तनाव का शिकार होगा। माँ को बच्चे की सलाहियत की पैमाइश और दिलचस्पी का ख्याल करके इसके मुस्तकबिल के गोल सेट करने चाहिए और इसी लिहाज से इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बच्चे के अंदर वतन से मोहब्बत का जज्बा और इंसानी हमदर्दी का जज्बा पैदा करना चाहिए। आखिर में मैं अपनी तकरीर एक शेर पर ख़त्म करती हूँ। अम्मी में बड़ा हो के बहुत काम करूँगा, भारत का ज़माने में बहुत नाम करूँगा, इंसान को इंसान से लड़ने नहीं दूंगा, कौमों की मिजाजों को बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं जज्बा इखलास व वफा आम करूँगा, अम्मी में बड़ा हो के बहुत नाम करूँगा। शुक्रिया। क्या नहीं है अम्मी? नींद नहीं आ रही आपको? क्या आ रही? ओके। सो good afternoon everyone. Assalamu alaikum to everyone. So my dear friends, I'm here to talk on overcoming negative self-talk. Okay. So that is my topic and this is Mobin Shaikh from Marathwada College of Education, B.Ed first year. Okay. So let me write down something. Only what you can observe. What you can observe here? Can you observe something? Dot or complete banner. Also so many things are written, but people only observe the dot. Why? Because it is the natural tendency of human being to accept the negativity so quickly. Yes. So that is the reason why our 80% thoughts are negative. हम जो सोचते हैं उसमें सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से हम जो सोचते हैं वो 80% निगेटिव थॉट्स होते हैं और 20% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। ये बात साइंस से प्रूव हो चुकी है। और निगेटिव थॉट्स यानी बहुत बार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो या फिर पेपर के एक दिन पहले इंसान को फील होता अरे मेरा पेपर कैसा जाएगा, या कोई इंसान बिजनेस चालू कर रहा, शॉप चालू कर रहा कोई नया, तो सोचता मेरी दुकान चलेगी कि नहीं, रेंट निकलेगा कि नहीं। सो दीज आर पहले अगर खुद पे डाउट लेंगे तो कैसे होगा फिर। निगेटिव थॉट्स सबके माइंड में आते हैं बट उसको कैसे कंट्रोल करना वो मैं बाद में बताऊंगा। बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट देखो लाइफ है तो देखो उसके पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि निगेटिव थॉट्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा देखो थोड़े बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं तो ठीक है, बट ज्यादा अगर आपको कंटिन्यूअसली निगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, आप एंजाइटी का शिकार होंगे, आपके लाइफ में टेंशन आएगा। आपने रिसेंटली कुछ सालों में देखा है बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सक्सेस है। सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान, these are the few examples of depression that they have committed suicides, and you should know that worldwide data nearly 8 lakh people every year sir commit suicide। 8 lakh बहुत बड़ा नंबर है ये। इंडिया में 2021 का एनसीआरबी का डाटा है, उसके हिसाब से 1,64,000 people has committed suicide, and in Maharashtra alone 22,000 is a big number। During that lockdown period 2021 that 22,000 people has committed to suicide। So देखो निगेटिव थॉट्स कंटिन्यूअसली लीड करेंगे तो ये सुसाइड तक भी जा सकता है।
इसीलिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा, थॉट जहां पे आते हैं उसको मन बोलते हैं, और मन यानी माइंड। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप लड़ाई कर रहे हो, जो भी आप प्यार कर रहे हो, या जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, इसमें सब में आपका माइंड इन्वॉल्व है। तो अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होगी। तो पहली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, इसके रेमेडीज क्या है। तो देखो दोस्तों, हर मर्ज की दवा एक ही है। निगेटिव थॉट से बचने के लिए सिर्फ एक ही दवा है, आपको खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए। जिंदगी में क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। जिंदगी में क्यों डरे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। तो देखो दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिन में आपकी दिन की शुरुआत, यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थिंकिंग। That if you are going to start your day with positive thinking, definitely the entire day that you will be happy for your rest of the day or rest of the time. और देखो, इंसान के पास सिर्फ आज होता है, कल और आने वाला कल ये उसके हाथ में नहीं है दोस्तों। सो पॉजिटिव थिंकिंग से वो अपनी लाइफ में हर एक चीज कंट्रोल कर सकता है। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है पावर ऑफ सेल्फ लाइक असर्शन। इंसान जैसे खुद को सूचनाएं देगा, जैसे इंसान अपने मन को बोलेगा कि देख बच्चा, आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा ना, वो दिल को क्या बोलता है, बच्चा ये दिल को जरा ऑल इज वेल बोल दे। क्या बोलते हैं, ऑल इज वेल। तो मतलब जैसे आप आपके मन को बनाए रखेंगे, वैसा आपके लाइफ में आपके उसके असरात आपको देखने मिलेंगे। दूसरी बात है, एक मैं आपको फ्री में बता दूंगा खुश रहने का फॉर्मूला। खुश रहने का फॉर्मूला ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अपने से कमतर लोगों पे निगाह रखो। अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को अगर आप देखोगे तो आप दुखी हो जाओगे। तो अपने से जो कमतर लोग हैं उन पे आप निगाह रखो। और उसके अलावा आप देखो, एक बात मैं आपको बोलूं, अरिस्टोटल ने कहा है, अगर आपको निगेटिविटी खत्म करनी है तो उसको झट से बोल दो। जिसके भी बारे में आपको प्रॉब्लम है उसको जाके बोल दो। आपने वो मूवी देखा है क्या, लाइक मैं बोल रहा हूँ शाहिद कपूर का मूवी है, करीना कपूर, जब वी मेट, उसमें वो क्या बोलता है कि तुझे जिससे प्रॉब्लम है उसका फोटो जला दे और कैसे फील हो रहा है तुझे, उसे अपनी पूरी भड़ास निकाल दे। सो अगर आप आपको जिससे भी प्रॉब्लम है अगर आप उसके बारे में बोल देंगे ना, तो फिर आप मतलब उसको बोलते ना कि मराठी में बोलते तुम्ही व्यक्त व्हा, म्हणजे मनातलं काय जे असेल ते समोरच्याला बोलून मोकळं व्हायचं, काय जे होईल ते नंतर पाहून घेऊ, म्हणजे खुश राहायचा, म्हणजे हॅपी राहायचा। हा खूप महत्वाचा फॉर्म्युला मी तुम्हाला फ्री मध्ये सांगितला। आणि अजून एक गोष्ट, मुन्नाबाई MBBS तुम्ही पाहिला असेल, त्यामध्ये लाफ्टर थेरेपी जे डॉट असता ना, वो हर चीज को क्या करता है, हर चीज पे वो हंसता है ना। मतलब खुश रहने के लिए आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। देखो, ब्रीदिंग 5 सेकंड आप इनहेल करो, फिर 5 सेकंड होल्ड करो, फिर 5 सेकंड एक्सेल करो। अगर आप आपके ब्रीदिंग पे ख्याल दोगे तो आपकी एंजाइटी या प्रॉब्लम जो भी है आपका, तो वो कम हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, कुछ बातें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है बॉस, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुछ बातें जरा तकदीर के हवाले भी करना सीखो। कोशिश करना अपनी जगह है दोस्तों, वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, दैट इज व्हाट वी कैन डू। यस, सो कुछ चीजें तकदीर के हवाले या खुदा के भगवान के हवाले करने से भी आप अपने आप को जो है तो फ्री महसूस करोगे। और लास्ट में मैं एक कहना चाहूंगा, क्यों देखे ले देके फकत, साहिर लुधियानवी का एक शेर है, ले देके फकत एक नजर ही तो है, ले देके फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी और के नजर से हम। और एक छोटी सी लास्ट बात है, देखो लाइफ में बहुत सारे लोग एंशियंट टाइम में गुजर गए जिन्होंने अपने मतलब निगेटिव दौर में पॉजिटिविटी के द्वारा जीत हासिल की। उसमें से एग्जांपल है बाबर, तो उसका एक फेमस एग्जांपल है, वो एक 1504 में एक वॉर हार गया था, तो उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में एक चीज लिखी है, क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने के लिए और सजदा करने के लिए तैयार नहीं। थैंक यू। Our next participant is Shilpa Rathore from MIT College. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. तर माझं नाव शिल्पा राठोड आहे. मी MIT नर्सिंग कॉलेजमधून आलेली आहे.
माझा टॉपिक आहे ओव्हरकम नेगेटिव्ह सेल्फ टॉक. सेल्फ टॉक म्हणजे आपण स्वतःशीच बोलत असतो, पॉझिटिव्ह असो किंवा नेगेटिव्ह असो. मोस्टली तर नेगेटिव्ह आपल्या मनामध्ये येतं, म्हणजे नेगेटिव्ह बोलला किंवा नेगेटिव्ह काही पण. मी स्वतः पण कधी कधी नेगेटिव्ह बोलते का असं, म्हणजे पेपर जवळ आले किंवा आत्ताही मी बसले होते कॉम्पिटिशनमध्ये, माझ्या मनात हीच भीती आहे का मी येईल का नाही किंवा मला बोलता येईल का नाही, हे माझ्या मनात. पण ह्याच्यावर ओव्हरकम करण्यासाठी आपण कसं, नाही मी करू शकते, ही गोष्ट मी करू शकते किंवा मी माझ्या मनाला समजवते, नाही आज मी काही करून बोलणार, निगेटिव्ह असो पॉझिटिव्ह असो मी बोलणार. तर सेल्फ टॉक सगळेच बोलतात, मी बोलते, तुम्ही बोलता. नेगेटिव्ह मोस्टली आपण नेगेटिव्ह नसलेच पाहिजे माझ्या मते तरी. नेगेटिव्ह हा आपलं स्वतःचाही कॉन्फिडन्स लो करतो, आपल्यासोबत म्हणजे फ्रेंड्स असो, मम्मी असो, पप्पा असो किंवा लहान भाऊ कोणी असो, त्यांनाही आपण म्हणजे आपलं इम्प्रेशन त्यांच्यावर पाडतो का नाही माझ्याकडून नाही होणार दादा पण मग हिच्याकडून होणार नाही, दादाच्या मनात तेच येतं का नाही बाबा हिच्याकडून पण होणार नाही. नेगेटिव्ह हा आहे ना आपला इंटरनल स्वतःमधला डायलॉग आहे. आणि आपण बघा एखादा पिक्चर बघतो किंवा पिक्चर बघण्यात आपण एखादी स्क्रिप्ट असते, तसंच निगेटिव्ह डायलॉग किंवा एखाद्या वर्ड्सची पण आपली स्क्रिप्ट असते. म्हणजे आपल्याला आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी आपण एखादी स्क्रिप्ट तयार करतो किंवा त्या वर्ड्सवर आपण ठामपणे चालतो. आपली लाईफ आपण कशी सुरुवात करू शकतो हे आहे. त्याच्यामध्ये आपण एक पॉझिटिव्ह थिंकिंग बोलतो, वी कॅन डू इट, आपण हे करू नाही किंवा करू शकतो. मी सगळ्यांना एक एक्झाम्पल देऊ इच्छिते. सचिन तेंडुलकर हा असाच क्रिकेटर झाला का? नाही, लगेच नाही झाला, त्याला पण वेळ लागला. जर चांगला कोच असेल, चांगल्या कोचने त्याला चांगली ट्रेनिंग दिली म्हणून तो आता सचिन तेंडुलकर आहे. तसंच आपण पण आत्तापासून आपण सुरुवात केली चांगलं विचारायची, चांगलं विचार करण्याची, तर आपण हळूहळू तरी पॉझिटिव्हकडे वळतो किंवा पॉझिटिव्ह विचार करू शकतो. तर आपण निगेटिव्हचे कोणी मला दुष्परिणाम सांगू शकता? सुसाईड, डिप्रेशन. मॅमनी जो आमच्या यूथमध्ये जास्त करून डिप्रेशन, स्वतःविषयी विहीन भावना असणे, दादांनी पण खूप चांगलं सांगितलं. अजून एन्झायटी. तर नेगेटिव्ह विचार आपल्या मनामध्ये असे काही म्हणजे डिप्रेशनला भाग पडतात, सुसाईड करायला भाग पडतात का बस. तर आपण ह्याला कसं ओव्हरकम केलं पाहिजे? आपण मेन म्हणजे स्टॉप हा शब्द यूज केला पाहिजे. नाही, मला विचार करायचा नाही. जरी आपण रस्त्याने चालत असलो किंवा चालताना कुठेही स्टॉप दिसला का तेव्हा आपल्या मनामध्ये असं झालं म्हणजे विचार आला पाहिजे, नाही मी हा विचार करायला नाही पाहिजे. अजून एक, आपण रस्त्यावर बघतो बांधकाम करणारी लोक असतात, बिल्डिंग बांधणारी लोक असतात, कोणी म्हणजे पेंट करताना सगळेजण हाच विचार करतात, हा माणूस जर तिथून खाली पडला तर पण कोणी हा विचार नाही करत काय काम करतोय तो, त्याच्यामध्ये किती म्हणजे गट्स आहेत, किती त्याच्यामध्ये हे आहे का तो वरती चढून पेंट करतोय. मग सगळ्यांनी जर असा विचार केला का नाही भाऊ हा म्हणजे ह्याच्यामध्ये गट्स आहेत म्हणून हा इथवर म्हणजे पेंट करायला उतरला, सगळ्यांमध्ये गट्स नसतात. तर सगळ्यांनी असा विचार केला म्हणजे हा पडणार नाही, तर ह्याने हे गट्स करून दाखवले. नेक्स्ट, आपण आपल्या जवळच्या म्हणजे क्लोज फ्रेंड असो, मम्मी असो, दादा असो किंवा लहान भाऊ वगैरे त्यांच्याशी बोललं पाहिजे, त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे का दादा असं असं होतंय किंवा दादा असे विचार येत आहेत. फ्रेंड्समध्ये आता सगळ्या गोष्टी शेअर करतात, मी करते तुम्ही करता, सगळ्यांनी गोष्टी शेअर केल्या पाहिजे जेणेकरून जे वाईट विचार येतात आपल्यामध्ये ते येणार नाही किंवा त्याच्यावर काहीतरी सोल्युशन भेटतं आपल्याला. भेटतं ना? मला तर भेटतो हो. नेक्स्ट वन, आपण लँग्वेज चेंज केली पाहिजे. मोस्टली लँग्वेज चेंज करताना म्हणजे आपण बोलतो ना इथे काहीतरी दुःखाचं झालं किंवा तो दुःख म्हणजे विषय म्हणजे सिमिलर वर्ड्स यूज केले पाहिजे आपण त्या शब्दासाठी. नेक्स्ट आपण बोलू शकतो म्हणजे स्वतःला आरशासमोर उभं करायचं. आरशासमोर उभं राहिल्यावर ना आपण स्वतःशी बोलतो, नेगेटिव्ह नाही तर पॉझिटिव्ह बोलायचं. नाही, नेहमी पॉझिटिव्ह बोलायचं, कारण की आपण स्वतःला समजवतो किंवा स्वतःशीच बोलतो त्यावेळेस पण पॉझिटिव्ह बोलतो. कळलं? मला माझ्या फ्रेंडकडून तरी खूप जास्त पॉझिटिव्ह वाईब्स येत आहेत. थँक्यू मयू. नेक्स्ट, मी लास्ट 2 ओळी माझं स्वतः संपवते. स्वतःवर प्रेम करायला शिका, सकारात्मक राहणे,
महत्त्वाचं आहे. सकारात्मक राहणे महत्त्वाचं आहे, कारण सौंदर्य हे आतून बाहेर येतं. थँक्यू. Our next participant is Zaina Motiwala from Pearls Academy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Good morning to everyone and all present here. I, Zaina Motiwala from Pearls Academy, is here to speak on my topic. The mental health of women, the effect of mental health on women on society. Society tells us that we should be a lot of things as women. Society tells us that we should be pretty. But we can't be too pretty, because then people think we are superficials and they won't take us seriously. As women, society tells us that we should be the caregivers for our family and children. But while doing this, we don't get time for us. We are told that we are not the best caregivers that we can possibly be. As women, we are told that we are free to share what we feel, what we want, but the minute that we overshare, we are said that there is something wrong with us. Society tells us that we should be many things and we should follow the rules that have been traditionally set in place for us. In mental health, it's no different. Once more, society says us that it's completely okay to speak about our mental health. But we try to do the same thing and they say that there is something wrong with us again. They label us. They say that we are weak. But no, my dear friend, everyone here in this room have mental health. And we can't ignore it. It's really very, very important for us, we as women. In USA, 1 of every 5 women is suffering from a mental illness. And it's something really very, very serious. And when we consider about women, we need to consider a few things. That women are more likely to live with anxiety and depression, even more than men. In their lifetime, they are more likely to experience violence with the prevalence of gender discrimination and social norms. Girls becoming exposed to possibility of child marriage, poor education and health, sexual abuse. But these women who are suffering are not weak. There are so many women who are balancing both heavy mental and personal life with a great load for their careers, just because they want the children to look at them. They want to be the role model for the children. Now, empowered and women with good mental health do not only contribute to their families, but they also contribute to their communities and also the next generation. Women is a full circle. Within them is the power to create, nurture and transform. Thank you. Thank you, Zaina. Our next participant is Shaikh from Pearls Academy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good evening to all of you. My name is Conan Kenza. I am from Pearls Academy. Today I am going to say a speech on the mental health of career-oriented women. Career-oriented women की जो mental health होती है, आज मैं आपको उसके बारे में बोलूँगी. So let us start from the beginning. When a girl child is born, she is bounded with boundaries. When a girl child is born, she is bounded with boundaries. Though being a girl child is considered to be a blessing, but her freedom is limited. She is a daughter, she is a sister, she is a friend, she is a mother, she is a wife, all above. She is a superwoman, but she is not treated as a human. उसे human के जैसा treat नहीं किया जा रहा है. According to the national crime record, 1 woman is raped every 20 minutes. Nearly 31,000 complaints are filed against harassment of a woman. Around 35,000 dowry deaths are reported in our country every year. Globally, 17.9% of women said that they have experienced harassment and violence at their working places. A woman don't want a career-oriented woman as her daughter-in-law. Tell me how will a career-oriented woman will survive in such an environment like this? Being a woman is a boon and a curse at the same time.
She have to look after her family and after her career at the same time because she is designed to be a homemaker. This kind of dual responsibilities can increase stress and disturb mental and physical health of a woman. And without a supportive family and society, this can lead into anxiety, depression, bipolar disorder, eating disorder, and etc. So these were the consequences when the family and the society doesn't support a career-oriented lady. Now let us talk about some women who received positive and supportive attitude from their family and their society. Bibi Khatija, she was the wife of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. She was a successful and victorious businesswoman. Savitri Bai Phule, she is the first female Indian teacher. She played an important role in improving women's educational right in India. So, what would have happened with her if her husband Mahatma Jyotiba wouldn't have supported her? Could she be the first Indian teacher? The first female Indian teacher? The answer is no. So, who is the first female Prime Minister of India? Anyone? Yes, Indira Gandhi. Her father Jawaharlal Nehru fought shoulders to shoulders along with her with a common aim of building a new India. So again, could she be the first female Prime Minister? Could she? No. The answer is again no. Kalpana Chawla, the first Indian woman to go to space. Sarojini Naidu, the first woman governor. Kiran Bedi, the first woman IPS officer. Razia Sultan, the first woman to rule on Delhi. Sania Mirza, world-class tennis player. Shushmita Sen, the first Miss Universe of our country. Lata Mangeshkar and Mary Kom. And many are the proof that if women are given positive and constructive support from their family and their society, they can give magical, remarkable and outstanding results. Every drop makes an ocean, my friend, every drop. Which means whether it is a small thing or a good thing or bad, it affects mental and physical health of a woman. And there is a quote by Eric Gray that whatever you give to a woman, she will receive it, multiply it and give it back to you. If you give her a house, she will give you a home. If you give her grocery, she will give you a meal. So it is totally up to you that what you want to receive from a woman. Because what goes around, that comes around. Now I would like to end my speech by saying that it is up to you that how you treat a woman. Because as I said earlier, she can be both a boon and a curse. Thank you. Jazakallahu khairan kaseera. And our next participant is Karan Ghule from MIT College. गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड ऑडियन्स अँड माय डिअर फ्रेंड्स. आज आपण येथे भाषण स्पर्धेसाठी जमलो आहोत. तर माझा टॉपिक आहे एक महिला ही समाजामध्ये कोणते म्हणजे समाजाला ओव्हरकम करण्यासाठी मानसिक आरोग्यापासून ओव्हरकम करण्यासाठी कोणता रोल प्ले करते. तर त्यासाठी मी पहिले 2 शब्द बोलू इच्छितो की ती आई आहे, ती ताई आहे, ती मैत्रीण आहे, ती पत्नी आहे, ती मुलगी आहे, ती जन्म आहे, ती माया आहे, तीच सुरुवात आहे आणि तीच सुरुवात आहे आणि सुरुवात नसेल तर सर्व गोष्टी व्यर्थ आहेत. महिला दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. तर मी बोलू इच्छितो की ती आई आहे. आई म्हणजे ती आई आहे म्हणजे मूल जसा लहान जसं जन्म होतो तेव्हापासून तर अगदी एका वयापर्यंत आई त्याला प्रत्येक गोष्ट शिकवत असते. म्हणजे की त्या समाजामध्ये कसं राहायचं, कसं वागायचं, कोणत्या गोष्टी कशा करायच्या हे शिकवत असते. तर त्याचप्रमाणे आजकाल म्हणजे पूर्वी असं मानलं जायचं की बाईचं कर्तव्य फक्त म्हणजे महिलांचं कर्तव्य फक्त एकच, चूल आणि मूल, बस हे 2च गोष्टी या महिलांसाठी होत्या. तर आजच्या या काळामध्ये महिला खूप मोठमोठ्या स्थान प्राप्त केले आहे. जसे की आपण आपल्या ऑडियन्सवरूनच ओळखू शकतो की त्यांनी त्यांचे पूर्ण शिक्षण कंप्लीट करून आज मोठमोठ्या पदावरती आहेत. जसं की आणि या आपल्या भाषण स्पर्धेवरून पण आपण ओळखू शकतो
की इथे पुरुषांपर्यंत तर महिलांचे पार्टिसिपेट जास्त आहे. त्याच्यावरूनच आपल्या लक्षात येते की आजकाल कोणत्याही क्षेत्रामध्ये महिलाही मागे राहिलेली नाही आहे. तर जसं की आपल्या चालू घरामध्ये घराचा पाया म्हणजे ही एक महिला असते. जसं की आपल्याला सर्वांना माहिती आहे घरामध्ये प्रत्येक छोटी गोष्ट किंवा मोठी गोष्ट ही सांगण्याची, जसं की पुरुष हा आपल्याला सर्वांना फक्त माहिती आहे की पुरुष हा कष्ट करतो आणि कमवून आणतो, बस एवढीच गोष्ट आपल्याला माहिती आहे. पण महिला त्या पुरुषाचा असं कोणीतरी थोर व्यक्तीने म्हटलं आहे की प्रत्येक सफल व्यक्तीपुढं एक व्यक्तीच्या मागं प्रत्येक सफल माणसाच्या मागं एका महिलेचा हात असतो. तर ते खरं आहे. जसं की दिवसभर ऑफिसमध्ये किंवा इकडे तिकडे जेव्हा माणूस थकून येतो तर त्याच्या डोक्यामध्ये वेगवेगळे थॉट्स असतात, वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. तर त्याला सपोर्ट देणे, त्याला पॉझिटिव्ह वेने ट्रीट करणे ही त्याची वाईफ करत असते. किंवा ती स्वतःसुद्धा आजकाल महिलासुद्धा जॉब्स करतात किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये सफलताने काम करतात. तर ते त्यांच्या घरांचा पूर्ण कुटुंब सांभाळून ते त्यांच्या जॉब करत असतात. आणि याच प्रकारे की जसं की आपले की मी BSc नर्सिंगचा स्टुडंट आहे. तर BSc नर्सिंगमध्ये नर्सचं काम काय आहे की पेशंटची प्रॉपर ट्रीटमेंट घेणे, प्रॉपर काळजी घेणे, हे तेच काम नर्स म्हणजे ही एक महिला, तिचं काम आहे की पेशंटला कसं ट्रीट करायचं, त्याची काळजी कशी घ्यायची आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याला ट्रीटमेंट कशी द्यायची. आणि महिला ही कोणत्याच क्षेत्रामध्ये कमी नाही. जसं की ॲज अ प्रोफेसर म्हणून किंवा टीचर्स म्हणून, मिलिटरीमध्ये, पोलीस भरतीमध्ये सर्व क्षेत्रामध्ये महिला आहे, पुढं आहे. आणि एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवितो. थँक्यू. Our next participant is Shubham Kharat from MIT Nursing. To all of you, before starting, I'm just my topic is myself is Shubham Kharat. I'm come from MIT Nursing College. I'm the student of 3rd year. So before starting my topic, I would like to ask one question to you people. The question is that what is the difference in between human and animal? They are having some component. So can anybody tell me what is the difference in between human and animal? Yes. Social animal was right, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Right. Any other answer from student? Lifestyle. Okay, mental activity. Okay. Okay. Is there any similarity in between animals and human being? Yes, right. They have emotions. So, human being, I changed some in the question. So there is having 3 parts of human beings. So in the 3 parts, first part is flesh. First part is flesh. Flesh is the body. In that, flesh is formed by organs, or there may have sense. Okay. Then second thing is having mind, and third thing is having spirit. So the man having 3 things. First thing is flesh. Second thing having mind, or we can say soul, or third thing it can having a spirit. Okay. I will tell you, the animal do not have a spirit. Animal have only 2 things. They have the soul and body. Okay. Body having a parts, then body having a senses. Which are the senses in a body? Like vision, then having tactile, just skin senses. So they are having vision, then hearing sense, taste sense. Like that sense, if you see anything through your eyes, the information goes to your brain, and the information as goes to your brain, so it goes to your mind and it affects in your body. Likewise, there are other senses, and the information goes to your mind and the body will perform. Like that, there has having second thing. There is next one question I will ask you: where are thinking come from? Yes. Where are thinking come from? Mind? Any answer? Any other answer? From heart. Yes, ma'am. From heart. From heart. Yes, right. Any other answer? So I will tell you, there are having some sources of the thinking come in our mind. First source is the world. In that world,
we receive the information by using senses, by getting the knowledge from friends, by getting the knowledge from books. Okay, that are all things which getting our information, and the information are working in your brain, goes to the brain, and the information goes to the brain, goes to your mind, and your mind is thinking, and how your mind is thinking, that your life will become. Okay, second thing is, first thing I told world, second thing is soul, second thing is own thinking. First I told world, second is own thinking, and third one is a spirit, or we can say a God. Okay, from the three sources our thinking are coming. As our thinking, it is one scripture I read in the Bible. In the Bible, having one book, name of the book is Proverbs chapter, in that 23 verses 7 is written as man thinking, so shall he become. As how he is thinking, where from his thinking coming, as how his thinking process in his mind, and the person will become like that. Okay, so the first thing I told you, the world. Second thing is, yes, students are getting bored. So second thing I told, that own thinking. As we are alone, we thinking anything. If we are alone, the mind is empty and thinking are coming. Negative, it may be negative thinking, it may be positive thinking. The most of the time, the negative thinking are coming in our mind. So we have to overcome that thinking. How we can overcome? My topic is overcoming this negative self-talk. So we have to overcome the thinking. How can we overcome? We can, when we are alone, the thinking are coming, we have to talk our friend, we can chat your friends, or we have to engage ourselves. Whenever we engage ourselves, so the thinking will not come. My posting is going on this hospital, and I saw some patient are there. They have doctor, they have engineer, and all they have lots of the degree they have. But I saw one patient. The patient is engineer. Retired engineer. In that whole journey, he is well. After his journey, after his got retired. So he is not having work. He has not engaged anything. So he alone. So while a person is getting alone, so the thinking are coming in mind. Mind will never stop thinking. Mind will never stop thinking. Mind always getting think. So we have to. Yes, ma'am. Right, ma'am. Mind will not get retired. So we have a choice. We have a choice, and we have to overcome. So our main topic is overcoming the negative self-talk. So overcoming means the problem will come in our life. We have to overcome. We have to dismiss the problem. We have to stop the problem. We have to overcome. We have to accept the situation. Most of the time our past happen, anything bad thing happen, and most of the time we stuck in this past. We don't have to stuck in the past. We have to think on a present. Sometimes we think about future. Don't be anxious about future. While this disease occur due to thinking, and thinking is very important part in our life. Third thing I will tell you, that is God and spirit. As we know, we go to the masjid, we go to the church, we go to the any religious places. There what we do? There we do prayer by read message, or read what we do, we read Bible, we read Quran, we read Bhagavad Gita. So from that thing, our thinking are coming. Okay, what are the thinking is having in that book? The spiritual thinking will develop in your mind. As the spiritual thing is develop in your mind, then our life will become like that. So I once again I repeat three things. I told that the thinking are come from the word. The thinking are come from the own self or own thinking, and the third thinking, it is come from the spiritual or God. Okay, so at the last I will tell you, we have to first overcome. We have to choose. We have to choose. How we can choose? If it is negative, we have to avoid it. If it is not good, we have to avoid. Third thing, we have to accept. If whatever happened in your past, we have to accept the situation and move ahead. At the end of my topic, I will tell one medicine of being healthy in your life. The happy mind is the
better medicine, is the best medicine for your life. As you think, your life will become, as you think, your life will be succeed. At the end, I stop here. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Our next participant is Rushda Farooqi from Saroj School. Myself, Rushda Farooqi. I'll be speaking on topic role of women in mental health of society. Women are integral part of society, backbone of a progressive society. But when it comes to mental health and suffering in silence, women continue to face challenges built on centuries of medical mismanagement of their health. After centuries of stigmatization, ill diagnosis and mistreatment, mental health awareness has finally become a huge talking point in recent years. A woman has to juggle many roles: caregiver, homemaker, employee, daughter, daughter-in-law, friend, and multiple roles. Each of this is covered by attitude, beliefs, thoughts, and perspectives. Most of them are accompanied by a set of unrealistic expectations and demands, which turn into an enormous burden to bear and fulfill. In the process of managing all the roles, women most often lose sight of their own individuality and needs. Research indicates that women are twice as likely to develop common mental disorders such as anxiety, depression when compared to men. According to World Health Organization, women are also more likely to experience trauma, often by way of sexual assault or abuse, and therefore tend to suffer post-traumatic stress disorder. Research has also shown that 20% of Indian mothers are more likely to be affected by postpartum depression. Women suffering from mental illness usually do not come forward because they get blamed and shamed for not living up to the societal expectations. As a society, the high expectations placed on women put us under immense pressure and are determinal to our well-being. This makes it all the more important to take care of ourselves and stay healthy. As we all know, women play a great role in growth and development of the society. And there is a famous saying that if you educate a man, you educate a man. And if you educate a woman, you educate a generation. Besides education, there are other places where women are taking leadership roles. If you look at the story from history, when Musa alayhis salam's mother lost Musa alayhis salam in the river, she also had Harun, the elder brother. But she sent the sister to follow Musa alayhis salam, and she takes the lead and goes all the way and follows Musa to the castle. And then even recommends that they bring their mother here. So the entire story is on the intelligence of this little girl and the role she plays. From keeping the home safe and clean to portraying excellent outcomes in everything. Women can do it all. Their capabilities must not be underestimated based on their genders. Social and economic factors can put women at greater risk of poor mental health than men. There are long-standing stereotypes around differences in genders that have been immersed in our society and culture. Gender discrepancies have even made their way into mental health research and care. Even though progress has been made in decreasing this stigma, there is still more work to be done in the field, especially when looking at variations in mental health between genders. And lastly, thank you so much for having me here. जजेस को बताना चाहूँगा कि इसने आज सुबह ही ये प्रिपेयर करी है, मतलब लाइक विद इन 2-3 आवर्स ये सब प्रिपेयर करके इसने प्रेजेंट किया. और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कितना टाइम है. अभी एक और पार्टिसिपेंट लास्ट बाकी है, फिर जजेस कुछ बोलेंगे, सर कुछ बोलेंगे, तो एक 15-20 मिनट्स और आप लोग को रुकना पड़ेगा. Our last and final participant is Tanzila from YB Chauhan. आज के इस प्रोग्राम के सदर मेहमानान खुसूसी और हाजरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम, गुड आफ्टरनून. खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मुझे आज इस अजीम व शान स्टेज से इन ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के रूबरू उस ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहने का मौका मिला जिसे हम औरत कहते हैं, जो माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में हर लिहाज से काबिल एहतराम और इज़्ज़त के काबिल है. आज 5
मिनट के इस छोटे से वक्त में मैं तंजीला नाज YB चमन कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तालिबा आपके सामने दिया गया उन्वान रोल ऑफ अ मदर इन मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जहनी सेहत में माओ का किरदार, इस उन्वान पर अपने कुछ ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ। हाजरीन महफिल, माँ की ममता बच्चों की शख्सियत बनाने में एक अहम किरदार अदा करती है। अगर एक माँ अपने बच्चे के एहसासात और जज्बात को समझकर इसकी तरबियत, इसकी परवरिश करती है तो ये बच्चा जिंदगी में हर किस्म के खतरात का मुकाबला करते हुए कामयाबी की मंजिलों को तय करता है और माँ की शान में ये कहता है, ये कामयाबियाँ ये इज्जत और ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ ये इज्जत और ये नाम तुमसे है, मेरा सारा मकाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहाँ और कहाँ में कम सिनो नादा, कहाँ बिसाते जहाँ और कहाँ में कम सिनो नादा, मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है, मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। माँ की शख्सियत बच्चे की शख्सियत में एक बड़ा किरदार अदा करती है। अगर एक माँ अपने बच्चे की नफ्सियात को समझकर इसकी परवरिश करे तो बच्चे में मुस्बित सोच को बढ़ावा मिलता है। इस मुकाबलाती दौर में अगर हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा एक कामयाब इंसान बने और इसे कामयाब इंसान बनाने के लिए वो इसकी तरबियत में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखती, वो इसके लिए हद से ज़्यादा मेहनत करती है। एक बच्चे को एक कामयाब इंसान बनने के लिए उसकी तरबियत में कोई गुंजाइश बाकी तो नहीं रखती, इसके अलावा इस पर सख्ती करती है और सख्ती करने में हद से तजावुज़ कर जाती है। और नतीजा क्या मिलता है? स्ट्रेस, खौफ। 7 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर स्ट्रेस दिया जाए, 7 साल से कम की उम्र के बच्चों को अगर स्ट्रेस में डाला जाए तो समझो अपनी माँओं ने ही अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बच्चों पर सख्ती ना करें क्योंकि उनमें स्ट्रेस हैंडलिंग की कैपेसिटी नहीं होती। ख़वातीन व हज़रात, किसी भी शख्स में 2 चीज़ें होती है, एक कैपेसिटी और दूसरी एबिलिटी। इसीलिए माँओं को चाहिए कि बच्चों की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि कैपेसिटी को भरने की। अगर इनमें ज़बरदस्ती से ठूसा गया तो नतीजा फटने के सिवा और कुछ नहीं होगा। खुसूसी तौर पर माँ ऐसा काम ना करे जिससे बच्चा स्ट्रेस में चला जाए। इसका नुकसान ये होता है कि बच्चा हर चीज़ से भागने लगता है और जिस्म की सारी केमिस्ट्री उसको उस चीज़ से बचाने में लग जाती है। इस बच्चे में एबिलिटी टू लर्न की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए बच्चे के गिर्द खुशनुमा माहौल क्रिएट करना चाहिए। घर में चीखने चिल्लाने वाला माहौल न हो, घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल न हो, क्योंकि माँ बाप के झगड़ों का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उड़ने तो परिंदों को अभी शौक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। हाज़रीन ग्रामीण, हमारे मशरिक़ी ममालिक ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में ह्यूमन साइकोलॉजी तकरीबन एक जैसी है और बच्चों की परवरिश का तरीका, उनकी तरबियत का तरीका भी एक जैसा है। बच्चे की पैदाइश से 7 साल की उम्र तक माँ की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को जो भी सिखाए इसके गिर्द कॉन्टेक्चुअल, प्रैक्टिकल और लवेबल माहौल क्रिएट करे। नसीहत, कंपैरिजन और डर और खौफ के जरिए आप इसे कुछ भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि 7 साल की उम्र तक बच्चे में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। याद रखें, 7 साल की उम्र तक बच्चे को डांटना गुनाह के दर्जे में आता है, मारना तो बहुत दूर की बात है। बच्चा भी रिस्पेक्ट चाहता है, उसके लिए इसीलिए माओ को चाहिए कि उनकी रिस्पेक्ट को लूज करने की कोशिश ना करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 7 साल की उम्र तक बच्चा आपका आका और आप उसके गुलाम हैं। 8 साल से 13 साल की उम्र तक माँ को चाहिए कि बच्चे में डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश करे, इस पर जोर दे, इसके सवालात के जवाब खुशनुमा माहौल में देने की कोशिश करे। ऐसा करने पर अब बच्चा आपका फरमाबरदार बनेगा, अब वो आपका गुलाम और आप उसके आका हैं। और जब बच्चा 14 साल का हो जाए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब आप इसके साथ दोस्त की तरह बिहेव करें। जनाब सर, ये थी मेरी चंद बातें जो मैंने थोड़े से वक्त में बताने की, समेटने की कोशिश की है।
अब मैं चना शार के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। गोद से गोद तक हर बात सिखाती है माँ, गोद से गोद तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज़ एक नया लफ्ज़ बताती है माँ। जिंदगी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में, जिंदगी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में, जब साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ, जब साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये सोच रहा कि ये बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 2 और पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लास्ट नहीं थी। सो आई एम सॉरी बोथ ऑफ यू। आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज खाजी तुबा from Rana Azad College. Good afternoon to everyone present here. I, Khazi Tuba Shehwar, student of Humanities first year from Rana Azad College. My topic is role of mothers in the mental health of children. Before diving into this speech, first we should know what mental health is. It's a complex, simple and emotional, psychological and social well-being. It's important to know so that we can handle and regulate our emotions, because it has its effect on our mental health, our social health and our physical health. Mothers. Mother is a beautiful, simple and a complex word in itself. She is a facilitator, a friend, a guide, a teacher and everything in one. The mental health of children and its healthy development is dependent on their parents, especially on mothers who are a primary caregiver, because they can understand the feelings and emotions, because from the very starting a child is undifferentiatedly connected with a mother. The mental health of mothers and children is connected in multiple ways. If a mother is facing some mental health challenges, it will become difficult for her to provide proper mental health care to her child, which can affect the mentality and the psychological point of view of that child. Early childhood experiences are very important, and according to Sigmund Freud, our mentality and personality is built from our early childhood experiences, and during this stage, children spend much of their time with their mothers. If a mother neglects her child, it may lead to low level of self-confidence, stress, anxiety, frustration, self-doubt and emotional distortions. Similarly, if a mother overly pampers, it creates weakness, incompetence, fear, anger and frustration. On the other hand, if a mother is mentally healthy and balancedly look over her child, then that child is able to reach the developmental and emotional milestones and will be able to learn healthy social skills and how to cope up with problems. And this child is more likely to have a positive approach towards life. So in early childhood, if a mother takes a good care with a positive approach, then it is less likely to have existential crisis for their child to have in the adulthood. Teens face many mental issues, and mother being an influencer can help in many ways, like simply having a conversation can create a sense of comfort, security, importance and value. Mothers can build, maintain and can make realize self-esteem and confidence, which can help to overcome those psychological issues. Mothers has a huge impact on children's mental health and has a great responsibility who can shape our personality. At last, I would like to end up my speech dedicating this beautiful poem to all the ladies out there. Your worth is not on the things you do. Your worth lies in your caring through. You go beyond your limited life. You are so strong from inside. You sacrifice for that one smile. You are therefore people you love all the while. You are a true woman of substance, and a big salute to you in life. Happy Women's Day to you, being so pure and true. Thank you. I think ये last participant रहेंगे अब जिनको मैं बुलाया. I think I'm still not sure. Ma'am, please make the changes. Darbar Zainab from Rana Azad College. सब Instagram use करते हैं? Team Beyond को follow कर लो. हाँ. Thank you ma'am. Good morning everyone. I'm Zainab Darbar from Rana Azad College. I'm a first year psychology student. The topic that I've chosen to speak about today is overcoming negative self-talk. Negative self-talk sets you up to failure. It acquires failure, it anticipates failure, it expects failure, and it's a sure thing.
When you engage in negative self-talk consciously or unconsciously, you are wiring your brain to fail. So, what is negative self-talk? It is anything you say or think which makes you look at something in a pessimistic perspective, through a pessimistic perspective rather than an optimistic one. Having a negative outlook in life may seem like something harmless, but it isn't. Over a period of time, if you have negative thoughts, over a period of time you will start procrastinating, and overall your mental health will be very bad. And can you erase these negative programs which your brain has created? Yes, you can. And this is due to the brain's plasticity. And even if you have negative thoughts for years, you can overcome this in a few weeks with the help of a therapist. So how do we overcome this? There are a few primary steps to it, and the first one is monitor. For the next 30 days, if we talk negatively to ourselves, we can monitor our thoughts, and we can think at morning, like what do you think when you wake up early in the morning? What do you think before you go to sleep? And you should take a note of it all. And being consciously mindful of your thoughts is the first step in overcoming negative self-talk. The second is edit. Each time you catch yourself saying or thinking something negative, stop and restate it in a positive way. So for instance, you make a mistake and you catch yourself saying something like, "Oh, I'm so stupid." Just immediately replace it with, "No, that's not like me. I'm smarter than that." When you edit your self-talk, you rewire your brain with an accurate picture of how you want to be and who you are. And the third step is practice positive self-talk. For about 10 to 15 minutes every day, talk positively about yourself. Let positivity walk into your life. As with anything that has to do with the brain, repetition is the key to reverse negative programs. And lastly, if you need more help to get yourself back to track, consult a therapist. You can talk to your family and friends about it, but sometimes we just need it. We just need professional help. So go for it. And I'd like to end my discourse with, the only thing that can come in your way is you. So if you think you can do something, you will do it. And if you think you can't, unfortunately you won't do it. Thank you. Have a nice day. So मैंने कंफर्म किया, यही लास्ट परफॉर्मेंस था. हाँ, बजा लो, तालियां बजाओ कुछ. I would like to call upon our first judge of the day, Mrs. Annie Nella, to come upon the dais. I will not say a few words क्योंकि मैं बोल नहीं सकता उनको. A very hearty and warm good afternoon to respected Dr. Kadri sir, respected judges, all the participants and the spectators. Once again, good afternoon. It was wonderful to be here as a judge, to present, to see the way you are performing. आप सभी ने बहुत अच्छा किया है. So शुरुआत मैं ऐसे करूँगी कि क्यों ना हम एक दूसरे के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए क्लैप करें जोर से. खाना उसी को मिलेगा जो तालियां जोर से बजाएगा. तो थोड़ा जोरों से clap your hands please. Well, to begin with, it was wonderful to hear the various topics on which each and every child had very actively participated. Yes, before coming to the conclusion, I would like to say one thing. In the life of events and competitions and game, participation is more important than winning. You get me? आप लोग की सहभागिता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपकी जीत या हार. यदि आप ये सोचोगे कि मैं जीत नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, then it's a negativity. Many children spoke about the mind concept, how to come out of the negative thinking. So even I am having a little experience of life, so I would just like to put in front of you the beginning of each and every day of your life. Can I have your attention? Can you please sit? Yeah, thank you. Right. Coming to the point, the day when you begin, yes, how you start matters. The first person you introduce yourself every morning is yourself.
आप सबसे पहले आईने में जाके अपने आप को देखते हो। मंजूर? मानते इस बात को? यस, देयर योर डे स्टार्ट्स। आप अपने आप से किस तरीके से बात करते हो? हाउ डू यू टॉक? सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन आई नो हैव एवर सेड यस? जैसे अभी मेरा नाम एनी है, तो मैं हर सुबह उठ के कहती हूँ आईने में देख के, भले मैं कितनी भी कैसी भी लोग हूँ, हाय एनी, आई लव यू। सो हाउ मेनी ऑफ यू डू यू ऑल से दैट? कैन यू रेज योर हैंड प्लीज? If you say that, you are going on the right track. If not, then it's a humble request to please start doing that. Nobody loves yourself more than anybody. Remember this. और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, तो आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। ये मेरा सबसे स्टेटमेंट पहला रहता है। You love yourself. Yes. Thank you. Now coming to the beauty concept. I will love only when I am beautiful. Indeed, each and every child of God is a unique creation. हर एक अपने आप में एक अलग, एक यूनिक क्रिएशन है। यूनिक का हिंदी वर्ड क्या है? अद्भुत, राइट? आई एम गुड एट वोकैबुलरी, बट नाउ अभी यहाँ खड़े रह के आई डू अंडरस्टैंड योर पेन, पार्टिसिपेंट्स। यू गेट मी? ओके, सो कमिंग टू दैट, व्हाट इज यू आर यूनिक। चाहे आप दिखने में कैसे हो, मैटर नहीं करता है। यस, यू इन योरसेल्फ आप एक यूनिक क्रिएशन हो। नो अदर वन कैन बी एनी। भले उसमें लाख अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन मैं खुद में एक यूनिक पर्सनालिटी हूँ। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ओके? सो व्हेन यू टेक दिस, लाइफ बिकम्स मोर इजी। अब ये एनी में इतने सारी क्वालिटीज है, कितनी अच्छी दिखती है, मेरे पास नहीं है, देन इट गोज टू जेलसी। जेलसी आप जिस पे करते हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता आपका है, क्योंकि आप है ना राख हो जाते हो, वो तो बढ़ता जाता है। You get me? Many of the youth and many of the human beings who confront is a jealousy, a comparison, a negative comparison. I never say comparison is negative. Comparison can be positive if you take that thing within you, because every person has one best thing and every person has one worst thing. So दो जनों ने आसमान, मतलब खिड़की से बाहर देखा, एक ने जमीन देखी और एक ने आसमान देखा। सो आपकी चॉइस है, आप क्या देखते हो सामने वाले में। यू गेट माई पॉइंट? सो नींद आ रही है क्या? अच्छा, मुझे ये कंफर्म कर दो, तालियां किस लिए बज रही, मैं जाके बैठ जाऊं या कंटिन्यू करूं? यस, थैंक यू फॉर योर अफर्मेशन। कमिंग टू द पॉइंट, यस, मैंने लिख लिए हैं, आईना का टॉपिक खत्म हो गया। मन, 3 इडियट्स। मन बड़ा चंचल है, किधर भी दौड़ता है, उसको बस में ही नहीं कर पाते। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, 18 साल का जवान हो, या 50 में होने वाली लेडीज का हो, everybody has, yes, everybody has that चंचल मन। How to control the मन? It's always in your hands. It's always in your hands. It's nobody. Yes, मन को appreciation सिखाइए अपने आप का। बहुत सारे बच्चों ने बोला है appreciation चाहिए मुझे, appreciation, फलाने बंदे ने मेरे बारे में ऐसा बोला। अरे भाई, उसकी नजरिया है, तुम्हारा मन क्या कहता है तुम्हारे बारे में? ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है या कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है? आई डोंट रिमेंबर दैट मूवी, उसमें एक आया था, मुझे लाइक्स नहीं मिले, लाइक्स नहीं मिले, लाइक्स नहीं मिलके परेशान है। लाइक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योर सेल्फ लाइक इज मोर इम्पॉर्टेंट। कैन आई गेट योर दिस वन? योर सेल्फ लाइक इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं पेशे से टीचर हूँ, मैं क्लास में थोड़ा साइलेंस चाहती हूँ। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप वहाँ बैठे हो, कुछ खड़े हैं यहाँ पे, ये है सामने जो हमारा तस्वीर खींच रहे हैं, राइट? एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स। कोई ऐसा बंदा है जो हाथ उठा के कहे कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स को किस तरह से के फेस करेंगे? आप उनके बारे में सोचिए जो आप जैसे हालातों में पले बड़े नहीं हैं, आप जैसे सहूलियत नहीं रखते हैं, उनके बारे में सोचिए, ना कि उनके जिनके पास बहुत कुछ है। अरे वाह, वो तो वैसा है, फिर तो हम कभी ऊपर नहीं देखेंगे, हमेशा अपने आप को डिमोरलाइज करते रहेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, यू हैव टू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, इट्स अ लाइव एग्जाम्पल। एक मिलिट्री बंदा था आर्मी में, और घर की परिस्थिति उसकी बहुत खराब थी, वेरी बॅड सिच्युएशन। ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर। तो एकटाच होता कमावणारा, त्याच्या घरी कोणीच नव्हतं। मग विचार करू शकता की त्या पैशाची काय मोल असेल त्या घरात। गेटिंग माय? So one night he was on his duty, night shift, and थोड़ा सा आँख लग गया उसका। आँख तो सभी की लगती है, नाइट ड्यूटी है।
उसी वक्त his bad luck, commander राउंड पे थे, he was on patrolling, he saw him sleeping, no discussion, nothing, सीधा रफा दफा बाहर, तुम सोए तो कैसा चलना? क्या ऑल्टरनेटिव रह गया उस बंदे के पास? Can anybody tell me? क्या रह गया? वापस घर जाएगा या मरेगा? What would you have done if you are in that place? Yes? Accept the things which you can't change or change the things which you can't accept. Thank you. You're ready for the speech. Let's go practical. जब पीछे जिम्मेदारियां हैं, कंधा जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, झुक रहा है, एक ही तरीका, एक ही जरिया था नौकरी, जिससे सबका पेट पल रहा था, वो भी छिन गया, तो एक ही रहता है कि मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं खुद को क्यों ना मार डालूं? सुसाइड। लेकिन बंदे ने वो नहीं किया। चलो, ऊपर वाले ने काफ़ी हिम्मत दी थी, घर चला गया वापस। फिर एक आइडिया आया, मैं तो सीशोर का बंदा हूँ, सीशोर के पास में रहता हूँ, कोस्टल एरिया। उसने मच्छी वगैरह बेचना शुरू किया। And to tell you, within a very short span time of 4 to 5 years, the same commander who removed him from the job invited him as the chief guest one of the function. This old man who was thrown away from the job. So never, everything comes in disguise. Disguise यानी कि अच्छाइयाँ भी बदसूरत जैसे आएंगे, प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसा छिपा हुआ आता है कि आपको उसका कवर खोलना होता है। If you are not facing, how do you open the cover? आपको कवर कैसे खोलना है? तकलीफ आई है, तकलीफ का सामना करना है, नहीं कुछ दे सका तो तजुर्बा दे जाएगा आपको आगे के तकलीफों से लड़ने के लिए। You get my point? Yes. To conclude with, हमारे सोसाइटी में एक बहुत बुरी आदत है। All my children whom I taught will come here please. सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाए, मेरे सारे शागिर्द लोग इधर आएंगे। सारे, just a last one, just bear me for a minute or two, so that you carry a message with you, which we everybody face. Height wise, unnecessary. Okay, height wise, okay, fine. Oh, they are grown up now, they won't listen. No girls? Right, so shall we start with the activity of 1 minute? Are you ready? Yes. Today is a good day, please share it with her. Today is a good day, we enjoyed a lot. Let's share it with each other. This was my sentence. Please, thank you. So कहने का मतलब ये है, जब आप एक के बारे में, thank you, जब आप किसी से सुनते हो तो confirm whether it is a fact or it's just a lie, it's a cooked up story. What happens is, बहुत सारे केसेस इसलिए नहीं होते हैं कि वो वैसा है, वो इसलिए है हम आधा सुनते हैं, आधा छोड़ देते हैं, आधा अपना लगाते हैं और पास ऑन करते हैं, and then what we do is we listen to that. Coming back to my point, mirror, आईने में देख के ये सोचिए ना कि उस बंदे ने क्या बोला था, वो मेरे बारे में सही है या गलत। Who is the best judge for yourself? आप खुद के लिए बेस्ट जज कौन है? No response? Okay, then I'm ending. कौन है? Who is the best judge for yourself? आपके लिए सबसे बेस्ट जज कौन है? मैं? आप खुद, आप खुद. So with this, I'll just to say, Happy Women's Day on this International Women's Day. मैं ये कहना चाहूँगी कि as a mother, I have 2 sons. मेरे 2 बेटे हैं, एक IIT रूड़की 3rd semester कर रहा है, एक 12th का एग्जाम दे रहा है, 2 बेटे हैं, मुझे बेटी नहीं है, but I have brought them up to give respect to women. If you are well educated, if you cannot see a woman with a respectable eye, let it be a male or a female, then the purpose is defeated. Get me? So माधुरी दीक्षित का मुझे वो बहुत अच्छा आता है कि मैं लड़कियों से ये नहीं कहूँगी रात को बाहर मत निकला करो, लेकिन मैं अपने बेटे को ज़रूर बताऊँगी कि बाहर अगर लड़कियाँ दिखे तो उसके साथ कैसे पेश आया करो. With this, I would like to end. Thank you. Good day. Thank you so much. बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हुआ मैम. ऐसा लग रहा था इंटरवल के बाद हम लोग खिचड़ी खाते थे, उसके बाद मैम का हिस्ट्री का लेक्चर होता था. Just want to say one line about my students. Everyone present over here from here till there. Am I audible now? Hasnat especially. Since long I haven't seen him. I am really very proud of you people, and I really wish to see you with much more events like this. More like this. Thank you and good luck. Now I request Dr. Aziz Ahmed Khadri sir to please felicitate our judges. तालियां रुकनी नहीं चाहिए.
बसेस के स्कूल बस। तो क्या लगता कौन है फर्स्ट, कौन है कॉलेज? Good afternoon, everybody. The result of your elocution competition is with me. Who will get first prize? Wait. Huh? Who will get? Only one. Only one. Only one has. Listen. Lesson of the day. Lesson of the day. Only one has positive thinking. My thinking, everybody has got prize. Everybody has done well, and I appreciate that all of you have done well. At your level of understanding, your level of perception, and your level of expertise, I will call it also, you have done well. So I congratulate all of you. Now the formality of giving prizes, first, second, third. Great ladies are sitting, it is in their hands, not in poor man like me. You are getting, so I am not declaring any prize, I am poor person. I will tell you one thing, but before that, you know which country in the world is happiest country, people in the country are happiest people. Which? Norway? Anybody? Wait, you wait. बोलो कौन सी? भूटान? No. अभी जो स्कोर किया गया अभी? Finland. Okay, anyway, you know it. Finland. So Finland has scored highest on the happiness score. So the people were interviewed. How come that you are happiest people in the world? So what must be their replies? First reply, they have given 3 answers. I will talk about 3 answers and I will stop. I will not take your much time. And try to keep to these 3 points. I think they are really significant. First point they told, we never compare with anybody. We never compare with anybody. This is a very significant message. You then with whom you should compare? Great personality with you to compare. What is that great personality? Yourself. You compare with yourself. You compare you with your yesterday and see what I am today. You compare your today with your tomorrow. That will definitely make you what? Mentally healthy, happy. Second point they took. Second point was, we interact with relatives and friends, parents, children, not with the mobile. How many of you have got mobile? All have. How many of you are ready to give your mobile for 1 week? 1 week देंगे? हाँ, forever. चलो ले लो. अभी और कौन देना चाह रहा है? 2 have given. अभी जाते मांगना नहीं वापस. कितने मांगेंगे? देखो अभी हंस रहे हो लोग. ये 2 भी दे रहे, कितना मुझे पता नहीं है कितनी देर रहेगा मेरे पास. हाँ, लोग मुझसे अक्सर देते हैं यहाँ पर, वो बाहर जाने के बाद वो ड्राइवर आता होता है, जरा फोन आ रहा है घर से मुझे देते. So they are likely to take it back. Huh? Anyway, but they have done daring of giving up mobile. Mobile has caused a lot of problems. So I will not discuss those. I will not go in that detail now. And third point they told. Third point is again very significant. What is that third point? Which you will appreciate after sitting here. We love nature. We go spend our most time in the nature, not in the buildings. Today we are spending most of the time in buildings, in AC rooms, closed rooms. Those AC rooms are what deprive you of so many things. Your sunlight, your free air, coming with the infections. So all these 3 points, what I think, they are really essential, really important, and I think we can inculcate them to be happy. And this is for, we have taken advantage of this occasion. It is not only for women, this is for men and women, everybody. And if man is happy, woman is happy, and if woman is happy, man is happy. So it is not one way, it is by-way process. So you take the message, your prize distribution, I have given you all the prize, but I think the 3 ladies will declare the prizes, not today, the prize will be declared when? Tomorrow, in program. So who will get, I don't know. Okay? Wish you all the best. Thank you. Good day. So सबको मालूम ना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कब है, कितने बजे है, और स्टैंड अप कॉमेडियन कौन आ रही? ये देखो, ये ऐसी दिखती. ठीक है, तो सब 7 बजे आ जाओ, क्योंकि अगर हाउसफुल हो गया, जो कि मोस्टली इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का काम बहुत अच्छा है. एक सेकंड ना,
टीम बियॉन्ड। तो जल्दी आ जाओ वरना सीट नहीं मिलेंगी आप लोगों को, यहाँ बैठ के अंदर देखना पड़ेगा और मसला होगा बस। तो सब 7 बजे आ जाओ और वो शो टाइम पे शुरू हो जाएगा, आज के ऐसा लेट नहीं होगा। एंड ठीक है, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। टीम बियॉन्ड को फॉलो करो एंड थैंक यू ऑल द वॉलंटियर्स, थैंक यू जजेस फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू अजीज अहमद सर, डॉक्टर कादरी सर टू लाइक फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, थैंक यू मैम फॉर कमिंग।